Okay, so namaskar all of you. Is my voice audible? Who has your voice? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Namaskar, sir. Yeah, namaskar. So, Yes, sir. Namaskar. ଆମର ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ କି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆକ୍ଟସ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ଟିକେ ଆପଣ ବାକି ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ବାକି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଗୁଡା ଆପଣ ରେକର୍ଡେଡ ଭିଡିଓସ ରେ ବି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଟିକେ କଣ ନା କିଛିଟା ଟର୍ମସ ଅଛି ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମସ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଭଲରେ ଓକେ ସୋ ଆଇ ହୋପ ଅଲ୍ ଅଫ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ବେୟାର ଆକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେୟାର ଆକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ବେୟାର ଆକ୍ଟଟା ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସେୟାର କରୁଛି ତ ଜଷ୍ଟ ୟୁ ଗେଟ୍ ଦ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ବେୟାର ଆକ୍ଟଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ନୋଟ୍ସ ରହିବ ବେୟାର ଆକ୍ଟର ନୋଟ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ ଜେନେରାଲି ପଢୁ ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଓକେ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ଗିଭିଂ ୟୁ ଦ ବେୟାର ଆକ୍ଟ ଓକେ ତ ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ କରିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଠୁରୁ ତ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆମର ନୋଟ୍ସ କରିକା ସେଇଟା ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ଲାସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଅପଲୋଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେ ଏଥରେ ଖାଲି ଟିକେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ଅଛି କଣ ନା ଅନଲାଇକ୍ ୟୁର ଅଦର ଆକ୍ଟସ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ଅବଭିୟସଲି ଓଡିଶା ଏକ୍ସାଇଜ ଆକ୍ଟ ତେଣୁ ଆର ଓକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଆର ଇଏ ଜେନେରାଲି ଆମର ଓଡିଶାର କେସେସ ରେ ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଗୁଡା ସବୁ ସିଜର କେସେସ ଗୁଡା ଠିକ ଅଛି କାର ଗାଡି ସିଜ ହେଇଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର ଏକ୍ସାଇଜ ଆକ୍ଟ ସେଥିରେ ମଦ ଫଦ କି କଣ ଆସୁଥିଲା ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ପଢିବା most of the judgments you will see are related to seizures and all ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରପରଲି ଆନାଲାଇଜ କରାହବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ଟା ନାଟା କପି ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଗୁଗଲ ରେ ପକେଇବେ ଓକେ ଗୁଗଲ ରେ ପକେଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜେନେରାଲି କେସ୍ ମାଇନ୍ କି ଇଣ୍ଡିଆନ କାନୁନର ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଟା ଇଣ୍ଡିଆନ କାନୁନର ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇସ୍ୟୁଜ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଯାହା ବି ଥିବ କେବେ କେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ବି ଥାଏ ଇସ୍ୟୁଜ ବି ଥାଏ ଇସ୍ୟୁଜ ଅଫ ଦ କେସ ରେ କ୍ଲିକ କରିଦେବେ କେବଳ ସେତିକି ଦେଖେଇବ ଆମର ତ ପୁରା କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ଓକେ ତ ସେ ଯେତେ ଖାଲି ଇସ୍ୟୁଜ ଜାଣିଗଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଏକ୍ସାଇଜ ଆକ୍ଟ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସେଗୁଡା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇନଡେପ୍ଥ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପୁରାଟା ଦେଖିବେ ଯେମିତି କି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ କଣ ରହିଲା ବୋଥ ପାର୍ଟିଜ ର ଓକେ କୋର୍ଟ କଣ କହିଲେ ରାଇଟ୍ ରିଜନିଂ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସେଗୁଡା ଟିକେ ଏବେଠୁ ଦେଖିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ପେପର 4 ରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଡ୍ରାଫଟିଂ ପ୍ଲିଡିଂ କନଭେନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ସେ ଡିସିସନ ସେଗୁଡା ସବୁ ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଦରକାର ହବ କଣ କଣ ଭେରିୟସ୍ ଡୋମେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଓକେ ଯେମିତି କି ସେ ଇସ୍ୟୁଜ କହୁଛି ପେଟିସନର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କହୁଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟସ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ ଲ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରୋଭିଜନସ ପଡିଲା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଦଉଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି କୋର୍ଟସ ରିଜନିଂ ଦଉଛି ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଦଉଛି ହେଲା ତ ସେଗୁଡା ବି ସବୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ତ ଏପିପି ରେ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଓଜେଏସ୍ ଧରିକି ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏବେଠୁ ଯାହା ଜଜମେଣ୍ଟ ରାଇଟିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସେ ନଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ରାଇଟିଂ ଯେମିତି ଅଲଗା ବୋର୍ଡରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ଆସିବ ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଭଲରେ ଶିଖିପାରିବେ ଓକେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଫଟିଂ ପ୍ଲିଡିଂ ବି ଅଛି ପେପର 4 ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକାଲ କେସେସ୍ ସବୁ ଓଡିଶା ରିଲେଟେଡ କେସେସ୍ ଥିବ ଅବଭିୟସଲି ଓଡିଶା ଏକ୍ସାଇଜ ଆକ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ବାହାର କେସ୍ ଦେଖିବାନି ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ କେସ୍ ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ
अच्छा आ गोटे कथा है कि जन मते भी व्हाट्सएप करथिले रिगार्डिंग बुक्स आ पे बुक्स अच्छी ठीक है तो जेमति कि हमर ओएलआर हरिकार तार सब बही अच्छी पर्टिकुलर एक्साइज एक्ट इज इंपोर्टेंट एक्ट ठीक है तो बट द थिंग इज दैट एटा 16टा एपीपी रो सिलेबस देखिले 16टा स्टैट्यूट 150 मार्क हैला 10 मार्क भी होनी गोटे स्टैट्यूट पे बुझिपारुछन तेणु ता पई आपण जदि पूरा बहीटा किनिबे तार किसी सेमिति रिक्वायरमेंट मते देखा जाउनी ओके आम नोट्स मोर देन सफिशिएंट हबो दरकार रो अधिक हबो ठीक अछि तो कम हबोनी बस तेणु सेतिकी ही कवर कले ठीक बेयर एक्ट प्लस हमरो नोट्स तो आपण को आ मते कहीं लागुनी किछि आ दरकार आपण को पड़िबो ओके सो लेट अस स्टार्ट देम बिफोर स्टार्टिंग दिस ओके बिफोर स्टार्टिंग दिस ये जो पर्टिकुलर स्टैट्यूट टच ओके दैट इज योर ओडिशा एक्साइज एक्ट 2008 तार टिके हिस्ट्री देखिबा आउ तार कोन पे एक्ट रो एम कोन ठीक है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस एक्ट ए एक्ट रे कोन कोन होछ सेटा तो ऑब्वियसली आपण देखिबे देखु ओके तार जेते सब सेक्शन 109 टा सेक्शन पकबके हमको पढ़िया पड़िबो खाली सेक्शंस पढ़ देले हबनी सिलेबस रे कोन देछि सेक्शन देछि एंड रूल्स दैट हैव बीन फ्रेम्ड देयर ठीक है तो रूल्स करी कभी हमको देखिया पे पड़ियो वी आल्सो हैव टू गो थ्रू द रूल्स भी सेति 100 प्लस अछि ओके सो फर्स्ट सेक्शन को आसीबा आगुरु फंडामेंटल क्वेश्चन टा टिके डिस्कस करिवा कि व्हाट इज बेसिकली ओके व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ दिस एक्ट ओके तो एथरे केतेटा जिंस गुड़ा मु अंडरलाइन करूची सेटा भी आपण लिखि देई थांतु ओके तापरे ऐप रु ताको देखि देबे निजर पर्सनल नोट्स जेतळे बनेबे एगुडा जो ना नोट्स आपण को दिया होची एगुडा आपण को पर्सनल नोट्स नो एटा ठीक अछि इंपोर्टेंट जिंसोडा दिया होची ओके सो दैट आपण कामडा टिके इजी हे जिवो किंतु आपण पर्सनल नोट्स बनै देले भलो कान देखंतु एगुडा गोटे गोटे माने एटा बहुत डिटेल्ड अछि ता भितर आपन को लागिला हां एटा इंपोर्टेंट एटा मते लिखिबार अछि तो छोटो छोटो नोट्स करिवे आपन को पर्सनल नोट्स जेंति कि एतरे 109 टा सेक्शन अछि ए जो ए पर्टिकुलर स्टैट्यूट रे तेनु आपनकर 109 टा सेक्शन परंतु 15 पेज भितर हे जिबा कथा ओके आ जे सेटा कोन होबो ना जते बेले आपन ताको रिवाइज करिवे परीक्षा पाखा बाकी आसीबो सेते बेले आपन मल्टीपल टाइम रिवीजन कर दे परिवे नहले आपन जदी जो नोट्स ता हमें तो एग्जॉस्टिव नोट्स देबो ताकू पुणी जदि धरिकी बसिले तो लगी जो दिन लगी जीवो कि 5 घंटा लगी जीवो तो भी संगे संग जेमति रिवाइज कर परिबे हला तो द आर्ट ऑफ मेकिंग पर्सनल नोट्स इज वेरी इंपोर्टेंट एटा प्राय जो माने ओजेएस करिका में प्रिपेयर करिसेंती आगुरु अपन निजर नोट्स बनैथिबे निश्चित भाबरे आ जो मार्केट रे जो मिलुची रेडीमेड नोट्स जार भी हेतौ जो भी पब्लिकेशन रो सेगुडा अपन को पर्सनल नोट्स नो तो पर्सनल नोट्स ता बनेबा निहाती दरकार ओके तो सही पॉइंट ता मु लिखि दोची पर्सनल नोट्स ता निहाती बनेबे पर्सनल नोट्स बनेबार भी केते ये अछि केना नोट ता तो सब बेले अपडेट होबा ना राइट सो पर्सनल नोट निश्चित सेटा बना हबो एमति भाबंतुनी कि मिली गला एटी नोट्स तो हे गला नै एटा एटा कॉमन नोट समस्त दियाउछ राइट बट आपनकर पर्सनल नोट्स बना पे पड़िबो तेनु ए जो ओडिशा एक्साइज एक्ट 2008 ओके आ एटा रिप्लेस कला किबा आ आगुरु जोटा बिहार एंड ओडिशा एक्साइज एक्ट 1915 ओके ताकू से इन सेंस कि आगुरु ए जो एक्साइज लॉ जोड़ा ए एक्ट रु प्राय कंट्रोल होतला बिहार एंड ओडिशा एक्साइज एक्ट 1915 ठीक है सो ऑब्जेक्टिव्स जदि हमें देखिबा ओडिशा एक्साइज एक्ट 2008 रो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ठीक है एगुडा आपनकर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट जोटा कि हमें जदि हमें गोटे डिटेल्ड स्टडी करिबा हमर स्टैट्यूट रो बेयर एक्ट रो ताले हमें जान परिबा स्टैट्यूट रे तो एमति देइनी किंतु 109 टा सेक्शन एनालाइज करला परे हमें एगुडा ऑब्जेक्टिव्स हिसाब रे नै परिया सो दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन इनफैक्ट आज जो क्वेश्चन टा हमें लिखिबा ओके आज हमर कोन एटा
सेक्शन 1 रे डेफिनेशन सेक्शन रे बहुत गुटे डेफिनेशन दिया है तो से गोटे गोटे को देखिया पे हमको पूरा क्लास टाइम टा लगी जीवो तो चैप्टर 1 टा आज हमें सारीबा चैप्टर 1 हैला सेक्शन 1 to 4 ठीक अछि सो दिस इज प्रिलिमिनरी चैप्टर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट देखिबा डेफिनेशंस देखिबा तो 88 टिके माइंड रे रखया पड़ियो ओके अल्कोहलिक बेवरेज बियर एंड अदर थिंग्स व्हिच आर देयर तो 2 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन ए थरे हमरो बहुत ओके आसे जीवो then section 3 and section 4 that is what we will study today tapare puni chapter 2 section 5 ro ame kali taku dhariba okay so एथरे कोन ना आपण को से जो से टेक्निकल टर्म्स टिके खाली जानले आउ मेनली यार क्वेश्चंस आसीबो कोन ना यार आंकर पावर कोन सीज करिया पई ओके सो से गुडा ही आपनकर बेसिकली क्वेश्चंस आसी हला तो ऑब्जेक्टिव्स घरिका हमें देखिबा तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हैला to regulate the liquor trade in a controlled and lawful manner number 1 हैला खाली हेडिंग्स लिखि देले कि बाकीटा आपण बुझी छथि लिखि दे परिबे हेडिंग्स उडा इंपोर्टेंट ठीक अछि हेडिंग्स उडा हैला इंपोर्टेंट रेगुलेट द लिकर ट्रेड दीटा इंपोर्टेंट जिंस कहला कंट्रोल्ड आउ लॉफुल मैनर टू रेगुलेट द लिकर ट्रेड इन अ कंट्रोल्ड एंड लॉफुल मैनर ठीक अछि तो एथरे आपणकर प्रोडक्शन लाइसेंसिंग ट्रेड selling distribution okay of alcoholic substance right you see एटा गोटे बहुत बड़ा क्वेश्चन कि हमरा ए अल्कोहलिक बेवरेज जोड़ा आपण सेल करिवा कथा कि नहीं some states in India have prohibition कोन ना ताकर सेठी से माने बैन कर दिजन पूरा ओके एंड केते स्टेट रे सेटा बहुत सक्सेसफुल है केते स्टेट रे एते सक्सेसफुल है ठीक अछि बट एनीवे हमरो स्टेट रे बहुत थोर ई क्वेश्चन टा उठे कि मदटा टोटल बंद कर दवा कथा बट हम गवर्नमेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट से कहया कथा कि सेटा गोटे बहुत बड़ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम तो ताको बंद करिवाटा ओके डिफिकल्ट तो लाइक जोडा हम कहउतली लास्ट ईयर ने ये 2025 रो फर्स्ट रे हमको डेटा आसिला कि ओडिसा पर कैपिटा लिकर कंजम्पशन रे इंडिया रो नंबर 1 कुछ करले तो तारो अलग सब डायनामिक्स अच्छी एंड अदर थिंग्स आर देयर लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर डायमेंशंस आर देयर बट ए एक्ट जेतो हमें पढुछु हमें बेसिकली फर्स्ट हमरो ऑब्जेक्टिव ओडिशा एक्साइज एक्ट 2008 रो हला टू रेगुलेट लिकर ट्रेड इन अ कंट्रोल्ड एंड लॉफुल मैनर सो वी हैव नॉट बैंड लिकर ओके तो जेतु लिकर सेल टा अलाउड अछि तो ताकू गोटे कंट्रोल्ड और लॉफुल मैनर रे रेगुलेट करा जिवो अदरवाइज कौन होगा ना बहुत लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो एमती नो कि होनी है होची बट स्टिल देन दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ओडिशा एक्साइज एक्ट 2008 हैला सेकंड टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ एंड प्रमोट रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग जोड़ा आजकल ना बहुत जन को आपण पचारिबे ओके जेंडर निर्विशेष रे तो से माने कहबे हमें सोशली ड्रिंक करू तमने इन अ सेंस हम रेस्पॉन्सिबली ड्रिंक करू वी नो व्हाट आवर लिमिटेशन इज ओके तो कोठी हमको स्टॉप करियार अछि जदी हम ड्रिंक करछु हम ड्राइव करिबुनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके सो थ्रू द लाइसेंसिंग नॉर्म्स अवेयरनेस मेजर्स restrictions on possession and sale the act aims to reduce health hazards arising from unsafe liquor consumption आउ सेथरे आपनकर ये भी आसीबो कोन जोटा कि हला इलीगल ओके लिकर जोटा कि आगु को जाय कि स्पूरियस हे जाय त डेफिनेशन देखियो ओके स्पूरियस लिकर पी की बहुत हेल्थ हजार्ड्स वे आखी खराब हे जाय वर्स्ट केस रे ओके आपनकर डेथ भी हे जाय लोकंकर स्पूरियस लिकर ओके ठीक तो सेटा भी गोटे बड़ ऑब्जेक्टिव एबे बहुत कमी गलानी 20-25 वर्ष आगु इट वाज वेरी कॉमन नॉट ओनली इन ओडिशा इन अदर प्लेसेस ओके स्पूरियस लिकर पी की 150 जनकर डेथ हेगला ओके मेनली एगुडा सब जगह एमती नो खाली आपन नॉर्थ इंडिया रे हुए सेमती नहीं हम साउथ रे भी सेठी आपन से टॉडी जो आउ से माने जो ताकर जो लिकर टा ट्रेडिशनल लिकर टा पियंती सेथरे भी सेम जिंस ही हुए ओके हुच जो हमें कहउछु राइट so to prevent illegal and spurious liquor trade illegal liquor और spurious liquor दीटा जिंस कोन
ना इलीगल जो आगु आम देखा जमी आम देखी ड्रग्स आ कॉस्मेटिक्स रे ओके तो एठी गोटे कौन प्रथमे तो है इलीगल लिकर ट्रेड माने आपण लाइसेंस लाइसेंस नहीं चोरा कारोबार आपण करछन ताकू केमती प्रिवेंट करा और स्पूरियस लिकर जो लिकर ता ठीक रे हेनी ओके सेतरे हेल्थ हजार्ड्स अछि आपण एमती बनै चंदी कि ताकू जदी बेसी जने पी देबो ताले तार किछि ओले सीरियस हेल्थ कंडीशंस हे बुझि पाले आउ ताकू जो बनै चंदी भी सेगुडा ट्रेडिशनल जिंस रु बनै नांदी केमिकल सब मिसै कि बनै चंदी स्पूरियस लिकर ओके तो सेटा भी एथरे इंक्लूडेड अछि तापरे नंबर 4 आउ कोन ऑब्जेक्टिव्स रहला टू एंश्योर प्रॉपर एक्साइज रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द स्टेट हमारा इन लॉ आल्सो यू नो दैट स्टेट को जिनसडा करे जोडा कि मैक्सिमम लोकंगर मैक्सिमम गुड जोथरे हे पारे सेटा को देखि कि पब्लिक पॉलिसी बनावे अच्छा जेहेतु स्टेट रो कहवा कथा कि हमें मद बंद कर परिबु ना इतपई काहे ना बहुत राजस्व आसु ठीक अछि ताल से राजस्वटा आसिया दरकार प्रॉपर्ली ताले कोन ना सेटा को आनी कि गवर्नमेंट ताको ठीक ठाक यूज करियो ओके ऑल्दो एटा इट इज सेम थिंग लाइक यू नो जेंति केएफसी की पेप्सी ओके एमाने जदि आपणकर हेल्थ इनिशिएटिव्स बाहर करिवे कि आपण मनुष्य को हमें हेल्दी केमती करियो ठीक अछि तो इट इज लाइक दैट जहाँ से बिकु जंदी सेटा टोटली उल्टा जिंस ओके आपन कोला हो बेवरेज ड्रिंक्स करिका हो किंबा जहाँ भी आपणकर से प्रोसेस्ड चिकन एंड ऑल दोस थिंग्स सेटा हेल्थ में भलो नो दैट वी नो बट जदि से माने सेही जिंसटा कहबे कि सेटा से माने बिकु जंदी बट अलोंग विथ दैट से माने या कहबे कि नहीं हमें हेल्थ पई सर्टेन प्रोविजंस करिवो ओके जेमती कि हमर बहुत गुडे सिगरेट ब्रांड्स अछि कि लिकर ब्रांड्स अछि जो माने यू नो से माने कहबे कि हमें डी एडिक्शन सेंटर्स खोलु एपटे मद बिकिबो ताको पीला पर जहाँ जहाँ सब सोशल प्रोब्लेम्स जहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रोब्लेम्स हम ताको पुणी ठीक ठाक करने हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी आम खर्च बनाऊ जो जहाँ को अभ्यास हो गला कि रेस्पॉन्सिबल ड्रिंक कर पारेनी से माने आसिकी सेठी से माने ताकर ओके रिहेबिलिटेशन करि परिबे सेम टाइप ऑफ थिंग बट एनीवे सेटा गोटे मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट तेणु सेटा प्रॉपर्ली जेमती कलेक्ट होते एमती नहीं कि ताको यू नो जो माने मैन्युफैक्चर करूछंती लिकर से माने रेवेन्यू दौना टू एंश्योर प्रॉपर एक्साइज ओके रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द स्टेट ठीक है सो excise duty is a major revenue source that ensures proper accounting and collection mechanisms to safeguard the financial interest of the state तापरे fifth objective कौन रहला ए एक्ट रो to empower administrative authorities with adequate powers तो जोटा हमें देखिबा ओके तो इथरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स अछि एक्साइज कमिश्नर हे गले कलेक्टर्स हे गले अदर कलेक्टर को तळे जो एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हे गले ओके सो एंड जो हम देखिबा ओडिसा एक्साइज सर्विस जोटा प्रकार रहउची तो सेथरे तांकर पावर्स कोन अछि जोटा कि गोटे गाड़ी टे के सीज कर दे परिबो विथ लिकर और यू नो एनी अदर सच थिंग्स ओके सो it promotes efficient governance and enforcement ठीक है तो एटा हला तार फिफ्थ ऑब्जेक्टिव टू एम्पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विथ एडिक्वेट पावर्स जेतेबेले हम पाके समय नथिबो आंसर रे लिखिबा पे पूरा केवल हेडिंग छोड़ा लिख देले भी ये गोटे गोटे पॉइंट मते टाइम नहीं मु कोन करी मते 5 मार्क रो क्वेश्चन पड़ला व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओडिशा एक्साइज एक्ट मो पाके तो 10 टा खंडे पॉइंट अछि हला 4टा की 5टा की 6टा पॉइंट लिख पारी सेठी ऑब्वियसली मो एक्सप्लेनेशन तळे जोटा गोटे लाइन की दी लाइन एक्सप्लेनेशन देछि सेटा मु लिखि परिबिनी त मु लिखिबी कोन ओनली हेडिंग छोड़ लिखि छाड़ देबी बुझ पाले तापरे नंबर 6 टू एनकरेज मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंसी तो एबे अपन जब देखिबे एक्साइज डिपार्टमेंट सेटा देखिबे हम आपको जाएंगे तो दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी खाली एक्साइज डिपार्टमेंट नो सब जेंते हम लॉ रे टेक्नोलॉजी यूज करछु सेमती इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड पहला तो सब टेक्नोलॉजी यूज करछु that supports e-governance in licensing and monitoring processes, thereby reducing corruption and improving service delivery. ठीक है जी? तेनो licensing, okay, of you know selling हो कि manufacturing हो, तो सेवड़ा उठें दी online process रे अपना करो रोची, okay, so that it can be tracked and उठे accountability ता ऊपर set करी ही पड़ी. Next.
Objective number 7, to control and monitor import, export and transport of intoxicants. Okay, so a जो particular Odisha Excise Act, eta government of Odisha को power दूची to monitor the movement of liquor across state and national boundaries to prevent tax evasion and black market activities. Okay, तेणु state monitor कर परिबो import, export and transport of intoxicants. Out last रे तारो 8th objective है to regulate possession and sale through licensing mechanisms. Okay, so तारो जो माने manufacture करले कि जो माने ताको distribute कर okay, so only सेही मानकर तांको लाइसेंस दिया होची और सेही माने ही से काम कर परिबे. Without that license जदि के कोची ताले again action will be taken against those people. Okay, so licensing under the act ensures only authorized individuals and businesses can engage in sale, manufacture or possession of intoxicants. बुझी पारले एटा तारा 8टा पॉइंट रहला. These are the 8 points which are the objectives of Odisha Excise Act 2008. Okay, ए जो तारा objectives रहला, any doubts you are having? ता भितर जदि किछि doubts अछि then you can ask me. এটা ডাইরেক্ট জিনিস হচ্ছে, এটা যদি ছোট Hello. কোশ্চেন 5 মার্ক র Sir, namaskar. তাহলে ଆପଣ ହଁ ନମସ୍କାର 8ଟା ତ ଲେଖି ପାରିବେନି, ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5ଟା କି 6ଟା ଓନ୍ଲି ହେଡିଂସ୍ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟରେ ଆମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ. ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 10 ମାର୍କ ର ପଡିଗଲା କି 15 ମାର୍କ ର ପଡିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ହେଡିଂ ଦେବା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି ଲେଖିପାରିବା. ହଁ, କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? Sir, 6 so modernization and transparency. Encourage. Oh. Modernization और transparency माने कौन? Modernization तो using modern tools and techniques, okay, for these activities माने licensing हैला कि monitoring हैला. Suppose एबे कौन सबू online होची और सबू software through रे होची. Okay, तेणु एई मासरे total ओडिशा भितर को let's say कोचोटे for example 100 liters रा okay मद आसीची आउ ओडिशा रु बाहर को जाईची 30 लिटर रा मद. एटा से माने जान परिबे थ्रू केना जो एंट्री होची सब पॉइंट रे, पॉइंट ऑफ एंट्री रे, रोड रे हो कि अलगा थ्रू सी हो, मेनली तो रोड रे हुए, तो से माने समस्त डेटा रखिथिबे. ता माने कोन 70 लिटर ता माने ओडिशा रे कंज्यूम हैला कि डिस्ट्रीब्यूट हैला. सेही 70 लिटर पई किए किए को जहाँ को लाइसेंस दिया इतला किए से गोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कले, सेल कले जा भी आउ से 70 लिटर रो राजस्वटा आपण को आछि कि नहीं, सेडा सब आपण ऑनलाइन ओके गवर्नमेंट कैन मॉनिटर इट. तेनु गवर्नमेंट जानिया पाइला कि ए पर्यंत 70 लिटर रो पैसा आसीनी, रेवेन्यू आसीनी, राजस्व आसीनी, मात्र 55 लिटर रो आछि. तर बाकी 15 लिटर कि कोन कला कोठी सेटा गवर्नमेंट आराम रे ट्रैक कर दे परियो के लोक पाखरे ए जो डिस्ट्रीब्यूटर थिला ता लाइसेंस नंबर है तार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एटी सीएनएजी 40 लिटर किंतु से देजी राजस्व देखि कि देछि कि से 25 लिटर नै छि. ओके, ताने 15 लिटर सेठी कोडी से कोन ताको एपर सेपर कर ताको नोटिस हो दपर. ओके, सो यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग आराम रे एसो जिंसो सने बार कर परिबे. लाइसेंसिंग मेथड से जने लाइसेंस में अप्लाई कर तो नॉर्मली 15 दिन तार जदी सब जिंसो से फीस दे देछि और बाकी जा सब ऑर्डर रे अछि डॉक्यूमेंट्स 15 दिन रे लाइसेंस दे देबा कथा. फॉर एग्जांपल तार 3 मास हला पड़छ, तो जे हायर अथॉरिटी जे हायर ऑफिसर तुरंत जे एक्साइज कमिश्नर का अछि सी ताको देखिला परे सी से हिसाब रे ऑर्डर कर परि कोन हला 3 मास के डेरी हला 15 दिन रे सही जिया कथा डॉक्यूमेंट तो सुदै सरले. Okay, so these are the things which can be monitored through modernization. Transparency कौन ना, everything is open and clear. हैला ओपेक नु कि जानी परियोनी कौन हला मते आमे 4 जण लाइसेंस पे अप्लाई करथुलु, 4 जण कर सेम टाइप रो सब व्यवस्था अछि किंतु जण को दियाला 3 जण को दियालानी, काहे कि से 3 जण को दियालानी, तो सेटा ओके दैट रीजनिंग विल बी गिवन. ओके, सो जदी मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी रहिला ताहले करप्शन आपणकर आस्ते आस्ते कमी आउ सर्विस डिलीवरी टा भी बेटर हो.
अकाउंटेबिलिटी आसिला कि से 15 लिटर जे रखिला ताकू नोटिस नोटिस होला पर सी आगु को एमती करबनी ठीक अछि प्लस अलगा भी जो माने ऑफेंसेस करछन्ती अंडर दिस एक्ट से माने भी पनिश हेबे तेनु गवर्नमेंट इज यूजिंग ऑल दिस टेक्निक्स नाउ एंड जितने बड़ ऑफिसर हेले भी जे भी हेले जदि भूलभाल काम करछन्ती ओके ताले गवर्नमेंट इन मोस्ट केसेस इज एक्टिंग अपन देखिले बे रिसेंटली गोटे जूनियर आईएएस ऑफिसर से यू नो जोटा कि पूरा नेशनल न्यूज हे गला राइट तो जदि सेही लेवल रो ऑफिसर को छड़ा होनी ताले तो स्टेट लेवल आउ तळ लेवल ऑफिसर्स करा ओके तो गवर्नमेंट इज कीपिंग ए वॉच राइट जिमती हमर ओडिया रे कहवा जाय थे ना कि अति रु इति तो सेही टाइप रो जिंस आ सेगुडा आराम रे ही परिबो एई सब टूल्स यूज करी ओके कहार से माने क्लरिकल लेवल रे काम करछन्ती किंतु कोटी कोटी टंकार संपत्ति अछि हाउ डज द गवर्नमेंट नो गोटे तो ह्यूमन इंटेलिजेंस अछि जो माने सब इन्फॉर्म करिवे कि ये लोक अछि बट देन गवर्नमेंट आल्सो इज यूजिंग ओके मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स ता भितरु केतेटा जिंस म आपन कहबी थिंग्स लाइक बिग डेटा एनालिसिस बिग डेटा रे कोन से जना पड़ जिवो कि अच्छा ये ए अमुक लोक आर एक्चुअली इनकम एतिकी नोन सोर्सेस ऑफ इनकम एतिकी तार से बते धरंतु तक एज हला 50 ताले 50 वर्ष रे तंकर एवरेज रे से एतिकी तंक पाखे एसेट्स रहिबा कथा किंतु तंकर एसेट्स अछि ताटू 20 गुण 25 गुण ठीक अछि सो सेठी तंक डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट रो केस होछि तंक ऊपर बुझी पारले तो एटा कोन के फाइल रु देखि ताकू मिसै की करछि आजिकली एडा सब एवरीथिंग इज डन ओके कंप्लीटली थ्रू दिस बिग डेटा एनालिसिस एंड अदर थिंग जोटा मैं डाटा एनालिस्ट कहूँ ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब मॉडर्न टूल्स यूज करी कराउछ और सेगुडा यूज कले ट्रांसपेरेंसी भी रहउछ ओके ट्रांसपेरेंसी कोन ना एबे अपन देखंतु इनकम टैक्स नोटिस करिका जो सब आसुछ एबे जो इनकम टैक्स नोटिस आगुरु कोन थिला से माने कहबे आपण इनकम टैक्स रेंज ऑफिस के आसन से रेंज ऑफिसर थिबे से तापर पुनी हजार प्रकार जिंस सेठी हुए मोस्ट ऑफ योर एडवोकेट्स यू नो ओके कोन सब हुए एबे किंतु सिस्टम से नु एबे कतडा हला आपणकर धरंतु आपण कम देइचंती इनकम टैक्स तो नोटिस ता आसिला यू विल रिप्लाई टू द नोटिस नोटिस रो जे असेसिंग ऑफिसर जे थिबो सी आपण को लोकल ऑफिसर नथिबो से की आपण जानि बिना राइट फेसलेस असेसमेंट होचे सी भी जाननी आपण की आपण भी जाननती से की सी मे भी बॉम्बे रो बसी की के जने आईआरएस जूनियर आईआरएस ऑफिसर थिबे सी देखु जन सेडा सी आपण को तापर कहले ठीक अछि आपण एति टाइम दिया हला आपण आ भीतर भरि दियन किंबा जदी आपण ताको आगु को नेक्स्ट ये को नै कि जे तले ट्रिब्यूनल जिबे कि कोन करिवे सेडा आपण देखिबे ओके तो रिजॉल्व हो गला जिनसटा जदी आपण को लॉ रो आगु को जिबार अछि यू विल गो टू द टैक्स ट्रिब्यूनल एंड अदर थिंग्स आर देयर बुझी पारले तो तेणु आउ से जो स्कोप टा बहुत कमी जीवो तेणु एबे जो ए जो बाबू धरा पड़ले 10 लाख टका नौथिले ए जो जिंस ओडा भी आस्ते आस्ते दिस ऑल दिस थिंग्स विल बी ऑनलाइन ठीक है तो आपनकर ए आपण एक्स्ट्रा एति ए करचंदी व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू हैव डन यू विल गेट ए नोटिस ऑनलाइन ताको रिप्लाई करिवे ऑनलाइन तो फेस टू फेस आपण को आसिया पड़िबनी एडमिनिस्ट्रेशन संगे सेत पे गवर्नमेंट रो मोटो कोन ओके मिनिमम ओके गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट रो फिजिकल स्ट्रक्चर संगे आपण जेते कम मिसिबो कॉमन लोकटा के तार मिसिबा कि दरकारी नै तार गोटे ताकू कोन दरकार अछि तार सर्विस गोटे दरकार अछि सर्विस प्रोवाइड हेले से गला ठीक अछि त तेणु एई जो दीटा जिंस जदी ठीक रे हेई परिबो जोटा कि बहुत ये रे हेलानी तो करप्शन आस्ते आस्ते कमिबो ठीक अछि जीरो नै हो पारे बट जो लोक माने जो करप्शन टा मैक्सिमम कॉमन लोगों को अफेक्ट करे सेटा आस्ते आस्ते कमी राइट अरे आपण सिना मुह जाई कि देखैले ऑफिस रे से कोन कहबा आपण को मते एति पैसा दियो न दियो जा भी आपण घरे बसी की किंबा जोडा हमर कॉमन सर्विस सेंटर्स अछि सेठी आपण फिल अप करथु फॉर एग्जांपल नाउ यू आर गेटिंग द कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड ऑल ओके एटा ऑनलाइन होची जेतो इनिशियली स्टार्ट हैला कि ऑनलाइन होबो सेतर भी हजार प्रकार रो प्रॉब्लम्स आसी गला कि हमें जाइतिलु विजिट कलु ए नथला से नथला ता ऊपर केसेस भी बहुत होईची हाई कोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट रे तो एबे सेटा आउरी बेटर हे जाउची आपण जदी ठीक डॉक्यूमेंट दउचंती देन
पब्लिक सर्विस ओके आपनकर ग्यारंटी एक्ट अछि ओडिशा पब्लिक सर्विस ग्यारंटी एक्ट सेतिक दिन भितर जदि से ऑफिसर आपनको सर्टिफिकेट ता देलानी आउ प्रॉपर कॉज देला कि आपण देई ना दिटा डॉक्यूमेंट ताले ठीक अछि ना आपण सब डॉक्यूमेंट दैछन और सेटा क्लियरली एबे देखा जाउछ बिकॉज़ यू आर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट से मना कर परिबनी एटा हेलानी सेटा हेलानी और जे मना कले केते मना करी ओके तो हां एटा आपण भलो रे देखा जाउन सर्टिफिकेट आपण आउथर अपलोड कर दे ठीक अछि तापर तो दबे पड़िबो ना सो दैट इज द थिंग तेनु एई दीटार जदि प्रॉपर आपण तार कहि परिबे एमालगेशन किबा मिसई परिबे आपण को बहुत भलो सेथरे एडवांटेज रहइबो करप्शन ता कमी कुछ बोले मॉडर्नाइजेशन कोन ट्रांसपेरेंसी कोन ठीक अछि जेंति कि एबे आपण ओटे सर्टिफिकेट अप्लाई करछन लेट्स से बर्थ सर्टिफिकेट कि ओटे कास्ट सर्टिफिकेट आपण पोर्टल रे से देखि दोछि एबे स्टैंडर्ड कोन स्टेटस अछि ओके विथ लेवल 3 जा से पूरा डिटेल्स दे दोछि त आपण जानि ले अच्छा जो जगह अटकी छी काहे कि रिजेक्ट हला रीजन दे दोछन ओके जदि रीजन ता ठीक नो आपण अपीलेट अथॉरिटी पाकु जाउछन ओके बुझि परले जे डाउट थिला आपनकर मॉडर्नाइजेशन कोन ट्रांसपेरेंसी कोन आगे ओके एटा गला तार 8टी हमें कहलु तार ऑब्जेक्टिव्स की गोल्स ऑफ द एक्ट राइट नाउ कमिंग टू स्कोप ऑफ द एक्ट एटा इंपोर्टेंट स्कोप ऑफ द एक्ट माने कोन कहा ऊपर लागू होबो एटा बेसिकली राइट सो फर्स्ट हला जेते प्रकार रो इंटॉक्सिकेंट्स अछि ओके सब ऊपर लागू होबो सो सब्सटेंटिव स्कोप बड़ वाइड स्कोप तार अछि कोन कोन ऑल इंटॉक्सिकेंट्स अल्कोहल हे गला बियर हे गला आपण कहबे अल्कोहल बियर तो सेम सेटा देखिबा डेफिनेशन रे अछि कोन डिफरेंस ठीक अछि स्पेशली इफ यू आर ए टीटोटलर माने आपण ड्रिंक करंती नहीं कोन ताले ए सब टर्मिनोलॉजी मेनली आपण जान नथिबे टॉडी टॉडीटा कोन जोटा कि हमें इट इज द देसी लिकर बिकॉज़ द नेचुरल ये रे जोटा आपण फर्मेंट करके ताको बाहर करछन ताको डिफरेंट ना रे ताको यूज हुए ओके को जगह रे ताको हांडिया कहउछन को जगह रे आउ कोन कहउछन राइट बट जोटा कि नेचुरली एक्सट्रैक्टेड एंड फर्मेंटेड सेटा ताको टॉडी कहउछन ओके तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ता जदी एपर सब गला ताले इट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ ताको जदी सेटा बहुत क्वांटिटी रे पी देले ताले डेथ किंबा ब्लाइंडिंग ऑफ द आई भी सेगुडा भी हे पारे ओके तापरे स्पिरिट्स ठीक अछि जोटा केमिकल बेस्ड आपण को रहउछि एंड अदर नोटिफाइड substances माने कोन विद इन दिस एक्ट ओके इफ द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द ऑफिशियल गैजेटी जोटा कि ओडिसा रो राजपत्र सेथरे जदी किछि नोटिफिकेशन बाहर करचंदी ए सब्सटेंस जोड़ा हमर एक्साइज एक्ट अंडर रे आसुछि ओके एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जेतु एटा ओडिसा एक्साइज एक्ट एन एक्ट मेड बाय द लेजिस्लेचर द स्टेट ऑफ ओडिसा तो एटा ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ ओडिसा ओके तारी भितरे आपनकर एप्लीकेबल हबो बुझि परले तो एटा हला तार सब्सटेंटिव स्कोप को जिंस ऊपर एटा एप्लीकेबल होछि राइट तापर नेक्स्ट आसिला द एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप ठीक अछि तो ऑब्वियसली इट इज ए स्टेट एक्ट so it empowers the state government to frame excise policies, notify permissible limits for possession, okay, regulate pricing and issue licenses for retail and wholesale. Okay, so for example possession by limit ठीक अछि अपन पर्सनल कंजम्पशन पई एई टाइप रो लिकर आपण एतिके रखि परिबे ताटू अधिक जदी रखुचंती देन इट विल बी सीज्ड आपण को अगेंस्ट भी एक्शन हबो ठीक अछि त देन रेगुलेट प्राइसिंग एटा में देखिबा रेगुलेट प्राइसिंग तार ओवरऑल गोटे हायर लेवल रे तार रेगुलेशन रुए माने एमिति नै कि कोन त कोन बॉटल वाइज रेगुलेशन ठीक अछि त कि आपण 1 लीटर में मैक्सिमम एतिके टंगा नेबे सेमति नुवा ओके तापर लाइसेंसेस फॉर रिटेल एंड होलसेल सेल्स तो कि रिटेल रे बिकि परिबो कि होलसेल रे बिकि परिबो कि ओवर द काउंटर बिकि परिबो माने बार घरी का जेमति अपन जाई कि रेस्टोरेंट रे कि बार रे बसी कि अपन लिकर कंजम्पशन करछन ऑल रेस्टोरेंट्स कैन नॉट डू दैट जा पाखरे से लाइसेंस अछि बार रो ओके बार लाइसेंस जा पाखरे अछि से ही सेमति सेल करि परिबो हियर बाय बार वी मीन द प्लेस वेयर दिस अल्कोहल इज कंज्यूम्ड बुझि परले तो सेटा तार रहला एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप तापर टेरिटोरियल स्कोप ऑफ कोर्स इट्स अ स्टेट एक्ट
तेणु सेटा केवल स्टेट ऑफ ओडिशा को एक्सटेंड करिवो ठीक अछि तापरे पर्सनल स्कोप सो इट अप्लाइज टू ऑल क्लासेस ऑफ पर्सन्स तो जे मैन्युफैक्चरर रहिला जे इंपोर्टर रहिला जे रिटेलर रहिला ट्रांसपोर्टर भी रहिला आउ फाइनली जे कंज्यूमर रहिला ठीक अछि सो अकॉर्डिंग टू various sections in this act and the rules thereby ठीक अछि ए सब जिंस आपनकर सेतरे रहिबो ठीक अछि तापरे आसिला लीगल स्कोप so act provides legal authority for administrative actions like seizure search arrest compounding of offenses adjudication appeal mechanisms okay through excise commissioner and the special designated courts eta hala tar legal scope तापरे डेलीगेशन स्कोप डेलीगेशन अर्थ कौन जो पावर टा दिया गोटे हायर अथॉरिटी की तांकर समय अभाव अच्छी तेणु सी कौन कर पावर टा तल लेवल को दे दौरान ठीक है तो फॉर एग्जांपल एटा स्टेट गवर्नमेंट असेंबली रे तार एक्ट्स गुड़ा कर रूल्स गुड़ा जोड़ा हम से गुड़ा से छाड़ दौरान ऑफिसर लेवल रे कि एग्जीक्यूटिव लेवल रे से माने बनै परिबे से ठीक है so that is example of delegation of power so the act allows the state government to delegate powers to various officers and non-excise functionaries including collectors and police officers for enhanced enforcement okay that is the concept of delegation tapare hela economic scope so economic scope kono na alcohol you know it's a बहुत बड़ा बिजनेस सेटा जेमति मु कहली कि ओडिसा हला पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन रे इंडिया रे नंबर 1 राइट सो अकॉर्डिंगली तो से हिसाब रे राजस्व भी बहुत आसी सेटा कंट्रोल करिया पे पड़िबो सेटा एक्चुअली गवर्नमेंट को आछि कि नै ओके सो इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेट रेवेन्यू जदि ठीक रे आपण राजस्वटा कलेक्ट कर करिवे ताले स्टेट रेवेन्यू को बहुत सेटा हेल्प करिवो स्टेट गवर्नमेंट पे ठीक अछि so through its licensing and taxation provisions the act regulates the commercial and financial activities related to alcohol significantly contributing to state's revenue तापर तारो preventive scope भी अछि preventive scope कोन strong enforcement provisions okay the ए जो भूलभाल मद बिकी की लोगों का देह खराब हुए से सब जिनसटा टी कमे परिबे okay to deter and penalize offenses such as illicit distillation इलीगल मद भाटी बहुत भंगा जाए सब अपन देखछंती रूरल एरियास रे भी सेल ऑफ स्पूरियस लिकर ओके जोडा कहउतली जोडा कि आपण पॉइजनस ओके स्पूरियस लिकर पी की लोककर आखि खराब हो जाए डेथ हो जाए ओके एंड ओवर पोजेशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स एटा पर्सनल लिमिट पे भी आउ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल रे लिमिट पे भी माने जति की लिमिट आपणकर दिया हिची एक्ट रे ताटू अधिका मद जदी आपणकु बाहरला ताले steps will be taken against you okay penal provisions there are visible so these are the scope okay of your Odisha Excise Act तो आज हम जो क्वेश्चन टा लिखिबा 15 मार्क रो आरी ऊपर रहइबो पूरा सिंपल क्वेश्चन डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ओके Odisha Excise Act सेटा लास्ट रे हम लिखिबा बट यू राइट द कहीं ना एटा अपलोड मु करनी क्लास पर अपलोड करिवे आपरे ठीक अछि तो अपन लिखि दियंतु सेटा ओके नंबर 1 टू रेगुलेट लिकर ट्रेड इन कंट्रोल एंड लॉफुल मैनर खाली हेडिंग्स लिखम सो दैट जेतो आंसर लिखिबे अपन पे रेडी रेफरेंस पे थिबो ओके ओनली टेक डाउन द हेडिंग्स केना बाकीटा तार एक्सप्लेनेशन दा सेटा आपण नीचे लिखिबे जदि आपण लिखिबार अछि ओके बिकॉज़ हमर ऑब्जेक्टिव्स रे अछि 8 पॉइंट आउ स्कोप रे भी सेमति धरंतु 8 टू 10 पॉइंट अछि ओके सो 15 मिनिट 18 पॉइंट मत लिखिबार अछि 15 मार्क तीन गोटे डायग्राम भी करी ओके जो माने आगु पर्सन डायग्राम जान जदि कोन करियार अछि सो जस्ट टेक द हेडिंग्स जस्ट राइट डाउन द हेडिंग्स लिखि परिबे न भी जदि लिखिया पे लिखिबाटा बेटर काहे ना एनीवे आपण लिखिया पे तो पढियो परीक्षा पे बट स्टिल इफ यू आर टायर्ड और समथिंग यू कैन टेक ए स्नैपशॉट किछ असुविधा हम एम टा हला आपण जानिवार अछि आपण लिखिबार अछि यू गेट द ओके आंसर you should be able to write the answer okay proper
way रे और within the given time टा बहुत important बाकी तो आपको दिया गला मटेरियल टा अपन निजे पढ़ी की ताको बुझी पारिबे ओके गला 1 2 3 4 if you want to write you write if you want to take a snap you take a snap jabi okay next 1 2 3 4 gala 5 6 7 8 बोला तब स्कोप टा देखंदु done so now let us start with that okay so it आपण first we will go to the एटी अवश्य आपनकर मटेरियल रे भी टेक्स्ट उडा देइची बट हमें डायरेक्टली बैरेक्टर देखि दबा खातर explanation ना हम मटेरियल रो देखिबा so short title extent and commencement this act may be called Odisha Excise Act 2008 okay subsection 1 रे कहला subsection 2 it extends to whole of state of Odisha subsection 3 हला it shall come into effect on such date as the state government by notification appoint okay so they dechi seta right kebe hitla eta dale act came into force from 1st April 2017 okay through notice whatever ja bhi segura par darkar nahi kintu publication kebe hitila Odisha Gazette re okay 8 March 2013 re right but it came into force from 1st April 2017 hela ए डेट टाको लिखि दियंतु 1st April 2017 नोटिस नंबर दरकार 1st April 2017 ओके बुझ परले तो एथरे बेसी किछि एनालिसिस करिवार नै स्टिल देन देखि दियंतु आपन को मटेरियल रे ओके जे तार देइछि तार वेरियस सबसेक्शंस उडा ओके मैक्सिम्स करिका देइछि बट एनीवे जो माने टिके कोन अछि बे ना आपनकर 2-3 वर्ष परीक्षा देबा पई से माने मैक्सिम देखले तांकर लाभ अछि एठी भी होबो आ ओजेस के जो भी परीक्षा दोछन ता पे होबो बट जो माने कंप्लीट कर चलेनी एटा एमति तो पॉसिबल नो कि सब थरे मते मैक्सिम मने रखिबी जो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स करो लाभटा या कि आपन सेमेस्टर परीक्षा रे भी एगुडा यूज हे परियो बट एग्जाम पे नो ठीक है स्पेशली एपीपी पे तो मोटर नो एपीपी रे हमरो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पड़ियो जोटा टू दी पॉइंट लिखिवार अछि ओके जो लास्ट टेस्ट रे पिला पठै जंदी मु लिखि छि सेटा बट समस्त कर हेला पर यू गेट द वॉइस नोट्स के जण चारि लाइन रो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखु छथि आपन कर तो 15 मार्क रो मैक्सिमम गोटिए क्वेश्चन 15 मार्क रो पड़थिला 10 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन मु स्ट्रिक्टली कहितली कि 5 मार्क क्वेश्चन रे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रहिबनी आ आपनकर जो मॉडल आंसर दिया भी हेतिला सेथरे भी से एग्जैक्टली से पॉइंट्स रे लिखि छि हैला इंट्रोडक्शन कंक्लूजन 10 मार्क क्वेश्चन रे रहे 15 मार्क क्वेश्चन रे रहे से भी गोटे की दी लाइन रो बट पिला देखो पैराग्राफ हिसाब रे लिखि छि एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम ही छि एथर को जो खाता जो माने मगै थिले आसी गलानी जो ओजेस 2023 रो से मानकर भी सेम प्रॉब्लम बहुत जण मैटर पूरा बढ़िया लिखछन जो माने पठै छथि खाताटा को एनालिसिस करिया पई कि सर कोन हैला काई कि हमको मार्क कम देले केते जगह रे तो ओपीएससी रो जणा पड़छि पूरा माने बहुत स्ट्रिक्ट जो भूल तो कहि होबनी भूल कहले भी कोन लाभ अछि ओके कि से माने इंग्लिश पेपर ते छाड़ देले इंग्लिश पेपर रे तो से गोटे अलग लेवल रो कोन करछथि भगवान मु एपर्यंत बुझी परनी कोन हिच सेटा ओके बट बाकी लॉ पेपर्स रे भी बहुत डिस्क्रिपेंसीज अछि ओके बोते डिफरेंट लोक देखि जंदी गोटे पिला
बेटर आंसर लेखि कम मार्क पाइछि गोटे पिला मीडियोकर आंसर लेखि बेसी मार्क पाइछि सेटा हबो लाइफ टा तो हमर पूरा इक्वल माने इक्वालिटी रो कांसेप्ट नै कि इक्वालिटेरियन जिंस न भाग्यर भी गोटे कथा थाए ओके टाण भाग्य जरा थिबो से टिके एते भलो न लिखिबी तार रैंक आसिबो आउ जनकर बहुत भलो लिखिबी से तार एई टाइप रो जिंस हबो जनरल ऑब्जर्वेशन हैला जो माने एई टाइप रो लंबा इंट्रोडक्शन लंबा कंक्लूजन लिखिकी मझिरे बॉडी पार्ट टाकू एते भलो रे अरेंज करि पार नांती किंतु कंटेंट भलो अछि सब जहा दरकार सब लिखि जन ओके बट पॉइंट्स से लिखि नांती और जदी भी पॉइंट्स लिखचंती एते खुंदी खुंदी के लिखचन ताकू माने क्लमजीली लिखिचन ताकू एटा जणा पड़नेडा पॉइंट रे देखाइछ ओके तांकू सेमिति ही मार्क मिलछि 15 रु 4-5 देकी छाड़ दैछन किंतु कंटेंट पूरा अछि ताकू टिके भलो रे सजाई कि जवान लिखचंती ओके से माने 15 रु 8-9 पाइछन बुझ परछन तो सेटा हमें फर्स्ट रु ही माइंड रे रखियर अछि ओके सो मैक्सिम्स एपीपी पे दरकार नहीं दरकार का पे जो माने आगु को परीक्षा देबे एबे कंटिन्यूइंग स्टूडेंट जो माने अछन ये गुडा इंपोर्टेंट ठीक अछि तर लैंडमार्क केसेस सेक्शन 1 रो कोन लैंडमार्क केस थियो बट एगुडा कथाडा हला इंपोर्टेंट केस 4-5 टा ही अछि एक्साइज एक्ट को नै प्रियव्रत साहू वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2021 ओके आरो केस देखंतो एबे केस एनालिसिस नॉर्मली हमरो ओजेएस क्लासेस रे हुए एटी एपीपी क्लास रे केस एनालिसिस लोकल केसेस रो ए जो केसडा मु जेमति कहली आपन को सेमति करियार अछि मु एक गोटे केसटा करि दउ ठीक अछि त दैट इज प्रियव्रत साहू वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा राइट सो अपन जस्ट आपको एठी मु कॉपी कर दउ छी अपन तो सेटू कॉपी करिया डिफिकल्ट हो अपन लिखि देबे सेटा ओके देन यू गो टू गूगल एंड हैव अ सर्च लेट मी चेंज द स्क्रीन थरे गोटे एग्जांपल दे देले बाकी सब गुडा करिवा आपन को दायित्व फर्स्ट मिनट आसिला तो गूगल रे आपण फर्स्ट सर्च कर देबे ओके सो आसी गला एटा प्रियव्रत जोटा हमें साहू वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा ठीक अछि ततरे इंडिया कानून रो जोटा अछि इंडिया कानून बोलो कोन करछि ना से तार यू नो एई टाइप रो से सब तार एआई यूज करिकि कैटेगराइजेशन कर दै छी ओके केस माइंड करि के एते भलो रे हेनी सो मते खाली फैक्ट्स ऑफ द केस जानिबार अछि तो मु खाली फैक्ट्स को मारली मोर फैक्ट्स आसी गला पूरा जजमेंट मते पढ़िया दरकार नहीं तो कोन हेतिला the facts reveal that on ethics date okay the sub inspector of police all police station detected the vehicle hero glamour motorcycle bearing registration number jaha transporting contraband liquor contraband माने कोन जोटा की हला proscribed जोटा की हला banned ताकू contraband को जाय ठीक अछि by the accused person namely blah blah okay the present petitioner as such the contraband was seized along with the vehicle and the accused persons were arrested after the charge sheet was submitted for aforesaid offence petition under 457 of CRPC was moved with a prayer to release the vehicle this was rejected by JMFC all thereafter the petitioner filed criminal revision petition before the learned session judge Kendrapada which was also rejected by the learned session judge this is impunged in the present petition later wala apno facts ta तो इश्यूज मते जानियार अछि त हम खाली इश्यूज उडा देखि ठीक अछि बुझि पाले सो एठी को मु कहली ना मैक्सिमम केसेस अपन जो देखिबे एई सब सीजर रही थिबो पिटिशनर आर्गुमेंट एनालिसिस ऑफ लॉ टा मोस्ट इंपोर्टेंट काहे ना सेथरे कोर्ट तांको रीजनिंग दोचंदी से एनालाइज करचंदी एई सेक्शन में कोन दियाइछ हैला देखंतु एटा केबे एटा आसिला आपनकर जेतबेले केसटा हैला ओके अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 ऑफ अर्स्टवाइल बिहार एंड ओडिशा एक्साइज एक्ट
ठीक अछि तो से सेटा ताकू यूज करछि से पुराना एक्ट तो व्हाट एवर बी द केस बुझि पारले तो तापर प्रेसिडेंट एनालिसिस आल्सो बुझिया पे इंपोर्टेंट मेनली आपण फैक्ट्स और इश्यूज ए दीटा देखिले काम सरला जानले अच्छा केसटा आया थिला ओके बुझि पारले तो एगुडा टिके कले कोन ना टिके आपनकर डेप्थ ऑफ स्टडीइंग प्रिपरेशन आपण जे सेल्फ स्टडी करचंदी ताले ए जिंसडा माइंड रे रखिबे ठीक अछि कि लाइव क्लास आपण देख पारनंती आपण चैम्बर टाइम चैम्बर रु फेरु फेरु रात 11टा हे जाउची ओके ताले आपण तो ऑब्वियसली ए क्लास टा करि परिबेनी लाइव क्लास टा ताले जेतेबेले भी आपण रिकॉर्डेड क्लास टा देखिबे आ गोटे देखुचंती कि गोटे पर्टिकुलर केस बहुत थरो साइट हेची ताले एमिति टिके केस रो एनालिसिस टा निज आडू कर देबे इट डज नॉट टेक मच टाइम 5 मिनिट रे सरीबो किंतु मुंडरे रजिस्टर हेकी रहला अच्छा ताले सीजर केस रे मु एटा को कोट करि परिबे एटा मु आपण को एग्जांपल देली को थरो एटा हमर एपीपी पे एटा सब जो एग्जाम पे आपण प्रिपेयर करचंदी मेथड टा सेम ही रहबो बुझि परले तो एटा बहुत इंपोर्टेंट मु कहतली वैल्यू एडिशन दीस थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर वैल्यू एडिशन ओके एगुडा वैल्यू एडिशन पे दरकार बुझि परले एटा गोटे देखे देली एबे आपनकर तो सब सेक्शन रे एमती गोटे दीटा चारटा केस थिबो जो केस उडा एमती नै के माने कोन मु एबे 100 टा सेक्शन तो 400 केस देथिबो ओके तादरे पुनी कॉमन केसेस थिबो तो धरन तो 150 टा केस हला मु 150 टा केस एमती देखिबि ना आपण देखंतु जो केसटा प्राय सबु थरे आसुची दैट इज अ लैंडमार्क केस ठीक अछि आपनकर कम टू योर मटेरियल आपनकर मटेरियल रे दीटा जिंस देछि ओके गोटे देला तो रिसेंट केस लो देला सेगुडा इफ यू आर इंटरेस्टेड ठीक अछि नहले लैंडमार्क केसेस गरिका ओके तो दीटा पार्ट रे गुडा दिया होछि लैंडमार्क केसेस एंड रिसेंट केसेस तो लैंडमार्क केस टा देखिले आ गोटे लैंडमार्क केस अछि मनोरमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा जून 4 2021 ठीक अछि सेटा भी देखि दे परबे तापर रिसेंट केस रो 2024 डिसेंबर रो ओके जुलाई 16 2024 एटा निजे बुझिया पे आ जदि समय अछि ताले भलो ताकू सेमती ओके इंडियन कानून रे देखि देबे कोन कोन केस उडा तो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन कोन लाइसेंसिंग अथॉरिटीज पे ओके तो स्टेट जो नोटिफाई जहाँ सब करूची चेंजेस करिका आपण लाइसेंस दबा आगुरु किंबा कोनोसी पेनल्टी लगेबा आगुरु आपण को सेटा गैजेट रे कोन कोन ओके गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देछि सेटा देखिबार अछि जो माने ट्रेडर और बिजनेसमैन अछंती जो माने ए लिकर ट्रेड रे अछंती ताले एक्साइज रिलेटेड ऑब्लिगेशन आपनकर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट नोटिफाई करछि सेटा आपण को जानिबार अछि आउ ताकू कंप्लाई भी करिवे राइट तापरे litigators and courts so cases involving pre-notification actions are likely to deemed void ab initio from the outset pre-notification actions kon notification jebe heithila ta aguru jodi kichi goda action niya hichi to segura void ab initio kana to notification asi natla କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇ ନଥିଲା ତା ଆଗରୁ ଆପଣ action ନେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତ so litigators and courts of price so that is basically section 1 okay एबे मु तो देछि सेटा समस्त पाखरे अछि एतरे बेसी किछि पढिबार नै बट स्टिल देन डज एनीवन हैव एनी डाउट एतरे मने खाली रखिबे ए प्रीलिम्स रे तो नै बट स्टिल देन रिमेंबर केबे एटा कोर्स रे आसिला 1 अप्रैल 2017 सेटा पर्सनल नोट रे साइड रे लिखि देथिबे ओके एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दैट जस्ट कीप इन माइंड ओके Fine. Now let us come to the one of the most important sections, that is definition. A definition section रे आपन को concept गुडा बुझिया पड़ियो काहे ना short notes गुडा पड़ियो 2 मार्क रो 5 मार्क रो से गुडा ए definition रु पकड़ो okay so in the act unless the context otherwise requires number 1 alcoholic beverages अपन देखिबे से बहुत टाइप रो जो आजकल बहुत पिला तो पिउछन रूट बियर ये से पूरा कि नॉन अल्कोहलिक बेसिकली ओके the alcoholic beverage माने कोन त डेफिनेशन एक्साइज ओडिसा एक्साइज एक्ट अंडर रे कोन अच्छा एटा गोटे जिंस हला डिफरेंट स्टेट्स रो एक्साइज एक्ट अछि ओके बट मोर और लेस अपन जो देखिबे कंपेयर करी की मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रो स्ट्रक्चर ता प्राय सेम ही थे बुझि परले तो अल्कोहलिक बेवरेज रो डेफिनेशन देखो alcoholic beverage means any beverage which is intoxicating
and fit for human consumption. तो दीटा characteristic रहिला alcoholic beverage रे. Okay, it may be any beverage. It is intoxicating. सेटा पीला परे मनीष fully conscious रू subconscious किंबा टिके बेसी पी देले unconscious state को भी पळे पारे. पर नॉर्मली कोन हुए ना मनीष subconscious state को पळे. ठीक अछि. एंड तमने ता रीजनिंग टा से बुली जिवो सेटा. ठीक अछि. तो रीजन करिवार एते पावर रहइबन. से पई यू नो इवन चाणक्य नीति रे कि अलगा भी हमारा जो वैदिक रे भी बहुत जगह रे कुआई छी कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आउ जे मेंटली अनस्टेबल पर्सन को एटा राजार दायित्व कि ताकू जेंती ओके दंड न मिलो. ठीक अछि. सेम थिंग हैज बीन आल्सो रिपीटेड इन अशोकस थम. ओके कि जो लोकोडा माने से बुझी पार नांदी ताका एक्शंस कोन. ओके तो तांकू आउ जो जे इंटॉक्सिकेटेड थिबो ताकू ओके दंडटा दबा कथा नुह. देन अगेन इन आईपीसी और नाउ इन बीएनएस आपण जानचंदी इंटॉक्सिकेशन भी दी प्रकार रे गोटे हला वॉलंटरी गोटे हला इनवॉलंटरी. मु जानि सुनि कि मदडा पी की गाड़ी रे लोकों को मार दउची तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर. मते जबरदस्ती सेटा करा हिची देन दैट इज अ डिफरेंट मैटर. ओके सेटा आपण बीएनएस रे पढिबे. ठीक अछि. एंड एविडेंस करी कभी यू नो दैट जदि जने इंटॉक्सिकेटेड अछि किंबा जनकर ओके आर केस रे जदि मेंटली से स्टेबल नहीं. ओके काहे ना बीएसए आ एबे जो नुवा लॉ सब आछि एथरे आ से टर्म छुड़ा यूज होनी डेरोगेटरी टर्म छुड़ा लुनाटिक एंड ऑल दिस थिंग्स मेंटली अनस्टेबल. ओके से सब जिंस से माने यूज करते. एनीवे दीटा कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक बेवरेज रहला. नंबर 1 इट शुड बी इंटॉक्सिकेटिंग इन नेचर. नंबर 1 सेटा लिखिबे. And second thing, it should be fit for human consumption. हला. So दीटा characteristics अपन कर रहला alcoholic beverage. तो जदि मते 2 मार्क रो क्वेश्चन पड़ला कि 1 मार्क रो क्वेश्चन पड़ला डिफाइन alcoholic beverage ये जेंति गोटे लाइन रे लिखछि मु सेमति लिखिबिनी. ओके तांकर आखि रे पके पई कि मु ठीक जिंसडा लिखिछि. सो मु एमति लिखि परिबी alcoholic beverage means any beverage which okay then number 1 is intoxicating and number 2 is fit for human consumption. बुझि परले सेटा हला प्रेजेंटेशन. जने स्ट्रेट एतिक लिखियो जने सेटा ए बी करी के प्रेजेंट करिवो तो से पिला को बेसी मार्क मिलियो. सेही कथा ही कहूची कि प्राय जो माने मेंस लिखंती प्राय 95% पीपल आर वेल प्रिपेयर्ड. ओके कने एते कॉम्पिटिटिव परीक्षा ओजेएस कथा कहूची. ओके सेथरे नॉन सीरियस प्लेयर्स एते न थांती. ठीक अछि. तो जो माने भी मेंस लिखुचंती से माने वेल प्रिपेयर्ड थांती. एबे से किए पैटर्न टा जानि कि से पैटर्न रे लिखिला तो ताको मिली गला मार्क टा. आ गोटे पिला एक्जेक्टली सेम लिखिछि किंतु से अलगा पैटर्न रे लिखिछि तो ताको मार्क मिललन तो मिललानी. एते डिफरेंस जण को आपण 9 दउचंती 10 दउचंती 15 रु जण को 4 भी दउना. ओके इंग्लिश पेपर रे पिला एते बढ़िया लिखि कि भी से जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रे जो बाबू समस्त को देइचंती सब 40 मार्क्स से बाबू तांकर दुई भी काहा को बोते देनांती 5 रु समस्त को 1 1.5 हैला. गोटे दी जण को बोते 2.5 मु देखि. आरो लोक जे देखि जंती जो माने प्राय समस्त पास करचंती इंग्लिश रे सी 2.5 3.5 देइचंती 5 रु जोटा कि नॉर्मली दिया हुए. ओके कॉम्प्रिहेंशन रे कोन अछि हमर भी तो अछि ना कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 रे. कॉम्प्रिहेंशन रे कोन लिखे गोटे सिंपल क्वेश्चन पचारछि क्वेश्चन रो आंसर टा दिया हिची पैसेज रे. गोटे मात्र रूल कॉम्प्रिहेंशन रो कि आंसर टा जो पैसेज रे लिखा हिची सेही भाषाटा आपण ताकू कोन त कहउचंती हम इंग्लिश रे पैराफ्रेज करिवे निज भाषा रे लिखिवे ओन वर्ड्स रे लिखिवे देन यू आर गेटिंग 3.5 मार्क्स मिलिबा भी कथा. लंबा चौड़ा लिखिबार नहीं 20 to 30 वर्ड्स भीतर लिखंती 2-3 लाइन रे सरीबो. ओके केते बेला सेटा भूल करचंती गोटे पेज लिखि देचंती राइट सेमति नहीं. बट एनीवेज जे भी हो ताको भी 1 दिया हिची 1.5 दिया हिची. whereas the other person who has corrected person की persons जे भी हो यदि मल्टीपल लोक इंग्लिश करेक्शन करचंती ओके मोर देन 1 तो श्योर करचंती केना जो माने पास हिचंती से माने भी खाता पठैचंती. से हैंडराइटिंग अलगा ए हैंडराइटिंग अलगा. आ ये जो हमर मार्क जे काटी चंती ये सब थरे कमेंट्स लिखि चंती. एटा मु प्रथम थरो देखली ओपीएससी रे
कहीं ना सी खाली जो मैंने एग्जामिनर मार्क्स दे दियंती आपन 15 रु रहिला 5 कि 10 प्लस व्हाई कोन पई भूल करचनी कोन केबे के लिखंती ना सिविल सर्विस रे भी मु देखिनी जुडिशियल सर्विस रे फॉरेस्ट सर्विस रे बोथरे देखिनी ये प्रथम थर ये बाबू जे चेक करचंती ये ताकू लिखि जंती आपनकर ट्रांसलेशन रे एई प्रॉब्लम अछि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अछि एईटा प्रॉब्लम अछि सेटा प्रॉब्लम अछि एमती के लिखंती बट जो माने पास हे जंती इंग्लिश रे ओके से माने एंड दे हैव गॉट लाइक 60 70 रेंज रे ओके आर लोक मान जोड़ा खाता दैछन किछ नै ताको जस्ट मार्क दिया 3.5 कुछ बाले तो से पे हमकु टिके प्रेजेंटेशन ऊपर आपको फोकस करने पे पड़ो कहीं से लोक ही आउ थे देखिए एमती तो ना कि डिफरेंट आउ लोक आसवे बहुत लिमिटेड लोक अच्छा यही खाता गुड़ा किए देखिए मुझे भी जानी कहीं कौन सी प्रोफेसर कि असिस्टेंट प्रोफेसर एगुड़ा पढ़ाती यूनिवर्सिटी रे तो नहीं से कौन से एबे किछि मास आगुरु मासे कि 2 मास आगुरु मुझे देइथिलि ग्रुप रे ओपीएससी रिक्वायरमेंट बाहर करथिला कि हमर खाता करेक्शन पे लोक दरकार ठीक अछि आ तार कौन देइथिला सब जो माने इवन प्राइवेट कॉलेजेस रे भी अछंती लेक्चर की असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेजेस रे से माने भी अप्लाई कर परिबे ठीक अछि आगुर जो माने सब थिले सो गोटे कथा है खाता मगेबे है जदि रिटर्न परीक्षा दौरान ओपीएससी बढ़िया गोटे सिस्टम करछि सेटा अलगा से माने करना अलगा बहुत गुडे स्टेट रो पीएससी करना यूपीएससी तो टोटली करनी दैट इज टू गेट योर कॉपीज है रिटर्न परीक्षार खाता निहाती मगेवा कथा आप रैंक 1 पाते तथापि मगातु ताले आप जापर कनसेप्ट केमी कौन मार्क्स गुड़ा आपको आसला ओके जी न मगे यू आर लाइक मिसिंग आउट ए लॉट ऑफ थिंग्स ओके आउ खाली मगेकी रखिले किछि नै ताकू इवैल्यूएट करेबे किंबा एनालाइज करेबे आपनकर जे मेंटर्स अछंती सो दैट डिफरेंट लोक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देबे सेही पर्सपेक्टिव को नै कि एथरक आपण परीक्षा देबे और श्योरली पाइबे तो अल्कोहलिक बेवरेज दीटा जिंस माइंड रखिबार अछि बियर को आसन तक ओके तो आपण कहबे बियर ता कोन अल्कोहलिक बेवरेज नो सेता तो इंटॉक्सिकेंट और से भी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पुणी बियर रो काई के अलगा देला टॉडी रो काई के अलगा देला सेटा देखिला पर जान पारे काई के ना ता प्रिपरेशन प्रोसेस ता दोछ ओके so beer means any liquor prepared from tanu first ela number 1 okay malt or grain with or without addition of sugar and hops ठीक है एटा हला नंबर 1 कोन ingredients hela ingredients malt or grain which may be with or without addition of sugar and hops. Second, inclusions. It includes black beer, ale, stout, porter, and such other substances as may be specified by state government. Okay, so second hela inclusions. Okay, the black beer, ale, stout, porter, and other substances. से गुड़ा सब इंक्लूड होउछ एडा इंग्रेडिएंट्स आर ठीक अछि तीटा पॉइंट अपन एथरे लिखि परिबे अदर सब्सटेंसेस कोन सर हॉप्स कौन सर शुगर्स एंड हॉप्स बेसिकली कोन से गुड़ा बेसिकली अपन कहि परिबे कि दे आर इंग्रेडिएंट्स सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ओके जो आपनकर केते जगह रे बियर मैन्युफैक्चरिंग हुए डिस्टिलर रे सेतरे आपनकर शुगर ओके और एनी से टाइप रो स्वीटनर्स एंड ऑल से माने यूज करती सो शुगर एंड हॉप्स ओके ओके सर यस तापरे नेक्स्ट ब्लेंडिंग तो एटा बेसिक किछ नै ब्लेंडिंग मींस हम जानते जनरल मीनिंग जा ब्लेंडिंग रो से दैट इज मिक्सिंग ऑफ 2 or more spirits of different strengths under and different qualities ठीक है सो जेतरा आपण ब्लेंड करिवे आपण कोन गोटे जोटा रिजल्ट मिलिबो तो तारो क्वालिटी टेस्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द 2 ingredients or more ingredients आपण चारिटा मिसे देले ठीक अछि तो सेटा हला आपनकर ब्लेंडिंग ओके तो एथरे बेसी किछ मन रखियार नै जोटा आपनकर हां कोन तो सर ये मॉल्ट और ग्रेन रो मीनिंग कोन सर टी बुझी पल्ले
सेगुड़ा बेसिकली आपणकर कौन कह आम इनग्रेडिएंट्स ओके ग्रेन्स माने बियर टा केमती होची इट्स बेसिकली ग्रेन्स रु होची किंबा मॉल्ट रु होची माने आपणकर तार बेसिक इंग्रेडिएंट्स गुड़ा से कहूची ओके ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आपणकर जो फूड ग्रेन्स गुड़ा अच्छी ठीक अच्छे तो सो तार भी पुणी आपणकर डिफरेंट टाइप्स अच्छी ओके अपन देखिए बियर तार डिफरेंट वैराइटीज थिबो बट ओवरऑल प्रोसेस टा सेम तार लिकर टा जो प्रिपेयर करा होची मॉल्ट और ग्रेन्स ठीक अच्छे सेटा तार मेजर कंपोनेंट मॉल्ट किंबा ग्रेन रु सेटा होची सेटा फूड ग्रेन जोड़ा नॉर्मल फूड ग्रेन्स जोड़ा आपण खाउछन ओके ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तापरे बोर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओके बोर्ड मींस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बॉटलिंग ऑफ लिकर मींस टू ट्रांसफर लिकर फ्रॉम ए कैस्क कौन से जो कैस्केट भी ताकू कहती हम देखते जो वुडन केक्स गुड़ा थाए ठीक है केक भी केबे ताकू आ जाए केक कैस्केट ठीक है that is a container in which liquor is kept. Okay, bottling of liquor means to transfer liquor from cask or other vessel to a bottle or other receptacle for the purpose of sale. Whether any process of rectification be employed or not, and includes rebottling. Okay, ताकू जब अपन rebottle बहुत time कौन हुए manufacturer okay general manufacturers थांती से माने कौन करंदी ना व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स बिकन ठीक अछि कोन से मन निजरो ब्रांडिंग दियंती लेट्स से बहुत बड़ा यू नो डिस्टिलेशन फैक्ट्री अछि से कौन करछि ना से बोतल उडा बनै की दे दउ सेतर से किछि लेबलिंग करने ठीक अछि खाली जिंस वाला दे दउछि ताकू पुनी नै की आ गोटे कंपनी से रीबॉटलिंग कर दउछि त से ता ब्रांड रे सेडा पसे की से तार रीबॉटलिंग कर दउछि हैला तेनो ए जो केक हरिका जेतर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपनकर सरुची ए जो केक हो कि कैस्केट हो कि कैस्क हो सेही थरे बेसिक क्वांटिटी रे आपनकर लिकर टा रखाउछ जेतेबेले ताकू आपण बिकिबा पर्पस रे छोट छोट कंटेनर्स रे बोतल रे कि पाउच रे जेमति जा आपण ताकू सेथरे ओके बॉटलिंग करचंती सेटा हला बॉटलिंग ऑफ लिकर ता धरे गटे आ गोटे हला रेक्टिफिकेशन द प्रोसेस सेथरे रही परिबो कि न रही परिबो स्पिरिट्स जेतेबेले आपण ये करचंती ओके लिकर को जेतेबेले तो सेटा तार बहुत जगह लिखाई थी ना रेक्टिफाइड स्पिरिट ठीक अच्छे तो रेक्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस जो थे कि आप स्पिरिट टाको से माने आउरी आपण कोन कहि पारे ह्यूमन कंजम्पशन पे बेटर बनाउछन ठीक अच्छे तेनु सेटा रेक्टिफाइड हे पारे कि न भी हे पारे राइट आउ रीबॉटलिंग भी हे पारे आउ थर जे कि ताको से माने चेंज कर दोछन तार जो थरे आसुची ओके व्हाइट लेबलिंग हे कि आस्ते व्हाइट लेबलिंग माने कोन व्हेन द ब्रांड नेम इज नॉट गिवन देखो किछटा बड़ बड़ कंपनीज थिबो तांकर निजर डिस्टिलेशन एंड बॉटलिंग फैक्ट्री अछि ओके तो से माने कोन करचंती ना जेंती से विजय माल्यांकर थिला ओके यूनाइटेड ब्रेवरीज तो सेठी आपणकर सी तांको किंगफिशर ब्रांड रे पूरा ब्रांडिंग करके बियर रो एटा बाहर जाउछ ठीक अछि बट आउ केते गुडे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स अछि से माने कोन करंती लोकल मैन्युफैक्चरर्स पई से माने व्हाइट लेबलिंग करंती ठीक है ना बोतल रे दे देबे सेटा तापर इधर से बोतल रे आरो लोकटा निजरो लगै दबो लेबलिंग किंबा से रीबॉटलिंग करियो बोतल बाहर करी पुनी आउथरा आ गुटे बोतल पस बुझि परले तो एटा हला बॉटलिंग ऑफ लिकर नेक्स्ट कंपाउंडिंग ऑफ लिकर मींस आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ फॉरेन लिकर हला तो नंबर 1 एटा हला आर्टिफिशियल प्रिपरेशन ऑफ का भाई फॉरेन लिकर केमिति मेथड कोन बाय एडिशन ऑफ इंपोर्टेड okay addition to imported or locally made spirit of flavoring or coloring matter or both ता माने कोन कंपाउंडिंग ऑफ लिकर माने ठीक अछि आपण मिसौचंती काकू फॉरेन लिकर ठीक अछि जोटा हम कोन तक कहू ता टर्मिनोलॉजी एक्साइज जोटा यूज करे दैट इज इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर IMFL ठीक अछि तो फॉरेन लिकर माने कोन ना इन द सेंस कि तारा कंपोजिशन जोड़ा आपण किछि गोटे फॉरेन लिकर रो कंपोजिशन ता आनिले कि और फॉरेन लिकर आपण आनछन
ताको मिसौचंती ओके सेथरे आपनको लोकल लिकर हो कि सेटा भी इंपोर्ट करके आनछन ओके ताको मिसौचंती सो दैट कोन होची ना फ्लेवर चेंज होची आ तार क्वांटिटी चेंज होची ओके अपन दीटा मिसेला को आपण जो जदी मेनली एटा कोन लोकल लिकर संगे मिसा हुए सो दैट लोकल लिकर टा आपण बनैले आ इंपोर्ट करके आनछन फॉरेन लिकर टा सेटा आपण पकोचन राइट सो एथरे कोन होची ना आपणकर फ्लेवर टा ओके से सब जिनसोटा चेंज होची आउ दैट इज कॉल्ड IMFL इंडियन मैन्युफैक्चर्ड और इंडियन मेड फॉरेन लिकर okay so addition to imported or locally made spirit of flavoring or coloring matter or both okay so in short बाहर लिकर अपन जेतले locally made liquor की imported liquor मिसौचंदे सेटा हला कंपाउंडिंग ऑफ लिकर ओके तो एटा जोटा विदेशी लिकर जोटा आपण कहउचंदी गोटे तो हला कि जोटा कंप्लीटली आपण इंपोर्टेड करके आउचंदी किछटा रेस्टोरेंट्स करी करे किबा बार्स करी करे कॉस्टली एक्सपेंसिव बार्स करी करे मिलथो प्राय जो फॉरेन लिकर जोटा मिले एठी तो सेगुडा IMFL इंडियन मेड की इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर सो दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ लिकर तापर आसला कंट्री लिकर जोटा कि इंडिया रे ही मैन्युफैक्चर हिच ओके so country liquor account it means all liquor produced or manufactured in India other than foreign liquor and Indian made foreign liquor and includes तेणु सेटा से दीटा अलग जिनस कहला फॉरेन लिकर गोटे अलग कैटेगरी रो मींस से कंप्लीटली फॉरेन रे बना हिची आपण देखो इंपोर्ट करके आनछंदी एंड IMFL जोटा कहली इंडियन मेड फॉरेन लिकर ओके जोटा कि आपण एठी कंपाउंडिंग करके बनैछन बुझि पाले तो एई दीटा को छाडी देले जिते प्रकार लिकर इंडिया रे मैन्युफैक्चर हिच अपार्ट फ्रॉम IMFL ओके एंड फॉरेन लिकर राइट दैट विल बी कॉल्ड कंट्री लिकर ठीक है और से कौन कौन इंक्लूडेड होची प्लेन स्पिरिट व्हिच हैज बीन मेड इन इंडिया फ्रॉम मटेरियल्स recognized as basis for country spirit like rice wood okay treacle or molasses and on which duty has not been imposed at rate fixed for importation of spirit into India ता माने import duty से थरे पड़िबोनी काई import duty पड़िबो सेटा को import कराई छी इंडिया भीतर को एडी तो मैन्युफैक्चर हैला ना तेणु ता ऊपर import duty पड़िबी okay so basic materials like rice wood okay treacle or molasses right and which has not been okay imported into India so any kind of duty import duty has not been charged so seta hela number 1 first type of country liquor then tari or toddy एटा हला जोटा कि हमर नेचुरली फर्मेंटेड ओके लिकर जोटा पे आपण मेनली रूरल सेटअप रे पाइबे all fermented liquors made from mahua rice millet or other grain according to indigenous process there are different state or different है जेंति गोवा रे आपण गले सेठी फेनीटा बेसी फेमस ओके सेमती सब डिफरेंट स्टेट्स रो तारा गोटे लोकल लिकर थिबो जोटा कि एई जिंस रुई हुए आइदर महुआ हला राइस हला मिलेट हला कि अदर ग्रेन्स हला ओके एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट इंपोर्टेंटली इंडिजिनस प्रोसेस से जगह रे तांकर कस्टम्स हिसाब रे प्रिपरेशन मेथड अलग अलग थिबो ठीक अछि तो से हमर एटी ओडिसा रो जाको हमें हांडिया कोचु से भी हे पर देन अदर मेनी अदर वेरिएंट्स एंड मेनी अदर टाइप्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द रीजन अपन डिफरेंट डिफरेंट रीजन को गले सेठिकार जो ट्रेडिशनल लोकल लिकर सेटा अलग अलग रहइबो एटा खाली इंडिया रे नो वर्ल्ड सारा जोटी भी जानतो सब जगह रे अपन से पाइबे तो सेटा भी इंक्लूडेड अंडर कंट्री लिकर and fourth type होची से any other intoxicant as may be declared by state government to be country liquor बुझि पाले सो एटा गोटे इंपोर्टेंट साइड रे लिखि दियंतु एटा इंपोर्टेंट कंट्री लिकर डेफिनेशन ता कंपाउंडिंग ऑफ लिकर एते इंपोर्टेंट नाही हमर अल्कोहलिक बेवरेज इंपोर्टेंट बियर टा इंपोर्टेंट okay so this country liquor is important thare taku padhantu jodi apana kichi you have any doubts then you can ask
Sir, indigenous process means इंडिजिनियस माने हला जेंति हमें colloquially कहू ना देसी means which has been derived from the same place. It has not been in a foreign process no. बुझी पारले तो लेट्स से इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया किए कहबे हम ट्राइबल्स से माने हेले हमर इंडिजिनस पीपल ठीक अछि अमेरिका रो इंडिजिनस पीपल आपण काहू कहबे रेड इंडियंस माने से माने सेठी थिले प्रथम ओके इंडिजिनस माने सेही जगार निजस्व जोटा बाहरु आसेनी ठीक अछि एबे आपण चलची दुनिया सारा प्रोटेस्ट सब चलची इमिग्रेंट्स को अगेंस्ट जो माने आसी सेठी रही कि कल्चर चेंज करिकी निज कल्चर इंपोज कर इंडिजिनस कल्चर को डिस्ट्रॉय कर ठीक अच्छे आयरलैंड रे भी चलची ओके इंडिया रे तो आमे गले आमर जेबे इंडिपेंडेंस होइतला सेबेठु आमर प्रॉब्लम चलची आ केते गुडे राज्य रे प्रॉब्लम टा बहुत आगु पळेलानी आसाम रे एबे ताका पॉलिटिकल लीडरशिप से ठीक ठाक ताको डील करछनी ओके बंगाल रे केरला रे मेनी अदर प्लेसेस आर देयर एमती ना कि ओडिसा रे नाही ओडिसा रे भी अछि बट रिलेटिवली स्केल टा कम अछि स्केल टा बढ़ुछि ओके आई होप हम गवर्नमेंट ठीक जानचंदी कोन कोडी कोन प्रॉब्लम अछि तो इंडिजिनस माने सेही ठिकार ओके जेमते हमें कहू ना माने कॉलोकियली माने कहिबारे लोकल से हला दैट इज इंडिजिनस माने दैट इज रिलेटेड टू दैट प्लेस इट हैज नॉट बीन imported from somewhere else बुझी पारले इंडिजिनस सो इंडिजिनस प्रोसेस माने दरंतु हमरो ओडिसा रे देखंतु डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स रे कंट्री लिकर बनैबार प्रोसेस टा अलगा मयूरभंज रे सेटा अलगा कलाहांडी रे अलगा कोरापुट रे अलगा ओके डिफरेंट प्लेसेस होता ना भी सेमती डिफरेंट डिफरेंट अपन पाइ बुझी परछन सो दैट इज इंडिजिनस आउ कोन अछि जदी कि फेनी बुझी पारले तो इंडिजिनस माने कोन आज्ञा आउ कोन कार जदी डाउट अछि पचारंतु एटा इंपोर्टेंट डेफिनेशन टा तो एटा देखि दियंतु इंपोर्टेंट तापर आसला डीनेचुरेंट ओके डीनेचुरेंट नेचुरेंट माने कोन देखो गोटे कथा हला ए जो मु कहली जो स्पूरियस लिकर ए जो हांडिया जोटा जेतले टिके बेसी एज स्पूरियस हे जाए सेटा ताकू कंजम्पशन कले लोकर डेथ कहीं हो जाए कि आखि कहीं ब्लाइंड हो जाए ओके कि स्पूरियस लिकर पी देले आखि कहीं ब्लाइंड हो जाए कहीं ना नेचुरली तार फर्मेंटेशन हम ଆପଣ ଯଦି ପଖାଳ ଭାତ ରଖିଦେବେ ବାହାରେ 10-15 ଦିନ ପାଇଁ ସେଟା ଆଉ କଣ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ରହିବନି କାରଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେଚୁରାଲ କାହିଁକିନା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିୟର ହଉ କି ଲିକର ହଉ ଏଗୁଡା ପ୍ରାୟ ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ମଲ୍ଟ ରୁ ହଉଛି କିମ୍ବା ଗ୍ରେନ୍ସ ରୁ ହଉଛି ଓକେ ସେଗୁଡା ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଯିବ ନା ତାର ଓକେ ସେଟା ଆଉ ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ କନଜମ୍ପସନ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହବନି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିୟର ବନାଉଛୁ କି ଆମେ ଯେତେ ଆମର ଲିକର ବନାଉଛୁ फ्रॉम दोज सब्सटेंसेस ग्रेन्स ओके मल्ट ताहले सेगुडा वर्ष वर्ष धरी कि मास धरी बोतल रे रहिबो केमति से तो नेचुरली फर्मेंट होबो ना तेणु आपण गोटे डीनेचुरेंट ऐड करिया पे पड़िबो ताहले से फर्मेंटेशन प्रोसेस टाकू से ताकू ब्लॉक करिवो ठीक अछि इट इज जस्ट लाइक प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ओके जंती आचार करिका आपण आचार तो खराब ही जो किंतु आचार काई खराब होने दिन पाई काना ऑयल मिसुचो ते आपण भलो रे से तर बुझी परछन सो डीनेचुरेंट मींस एनी सब्सटेंस एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर एड मिक्सचर विथ स्पिरिट ओके जोटा से जो स्पिरिट रो ता संगे मिसेबे कोन पई ना सेटा जो तारा जो अच्छी इंग्रेडिएंट्स गुड़ा सेगुड़ा नेचुरली फर्मेंट न हो in order to render the mixture unfit for human consumption whether a beverage or internally as medicine or in any way whatsoever okay सेटा हला डीनेचुरेंट ठीक अछि and according to सर जो डीनेचुरेंट कहले एडे सर केमिकल को बुझेबो सर हाँ it is a chemical obviously ठीक अछि आज्ञा सर denaturant means to mix spirit with one or more denaturants in such manner as may be prescribed and denatured spirit means spirit so mixed okay so that is denaturant right and denature
सो इटा भी इंपोर्टेंट मार्क कर दियंतु राइट तापरे हला एक्साइजेबल आर्टिकल माने जो गुडा ए स्कोप रे आसुची एक्साइज एक्ट रो एनी अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी अदर इंटॉक्सिकेंट से गुडा हला एक्साइजेबल आर्टिकल ठीक है मींस व्हिच विल कम अंडर एक्साइज ओके सो एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी ठीक है तो एटा टिके इकोनॉमिक्स रो बेसिक टिके हमकु जानिया पे पड़िबो एटा बुझिया पे ओके सो फर्स्ट कथा हला फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज व्हाट इज अ ड्यूटी ठीक है तो about टैक्स सुनी चंती सरचार्ज सुनी चंती सेमती ड्यूटी कौन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ड्यूटी ओके जदि हमें सेमती पचारिबा राइट सो सेटा टिके बेटर हबो मु दि तीनटा पॉइंट कोची खाली आपण लिखि दियंतु साइड रे कि आपण खाता रे लिखि दियंतु ओके देखंतु ड्यूटी number 1 point number 1 it is a financial charge it is a financial charge which is imposed mainly on import and exports of goods mainly on imports and exports of goods and also on manufacturing and consumption and also on manufacturing and consumption ओके एगुड़ा कौन आगुरु आमर बहुत हजार प्रकार ड्यूटी करिका थिला किंतु जीएसटी आसला परे सेडा सब ता भीतर ही आस जाई ओके नेक्स्ट पॉइंट इट हैज नैरो फोकस ना टैक्स आपण तो कहउछन टैक्स रे बहुत जिंस जो ड्यूटी टा स्पेसिफिक ओके इट हैज नैरो फोकस mainly concentrating on international trade जोड़ा आपण कहउछंती एक्साइज आपण कस्टम्स ड्यूटी जोड़ा आपण कहउछंती ओके सेटा इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल्स कस्टम ड्यूटी जोड़ा सेटा का पे लागु इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओके एक्साइज ड्यूटी जोड़ा हमें पढ़ु एटा मेनली ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग but subsumed under GST okay GST under रे आस जाउची सेटा आउ काउन एग्जांपल अपन दे पारे ड्यूटी रो जदि कोर्ट रे अपन देखते स्टैम्प ड्यूटी ओके लीगल डॉक्यूमेंट्स से जोड़ा अपन दो स्टैम्प ड्यूटी ओके बुझी पारले तो एटा हला आपनकर ड्यूटी तापर से ओडे सीवीडी देछि ओके काउंटर वेलिंग ड्यूटी
तो सेटा लिखंतु काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सीवीडी भी ताको कह जाए काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ओके अच्छा काउंटर माने कौन आम लीगल अपन मोस्ट ऑफ योर एडवोकेट्स अपन काउंटर करा हो ठीक अच्छे सो दैट इज से अपन जानी परिबे काउंटर वेलिंग ड्यूटी कौन बुझ पारे सो टेक डाउन काउंटर वेलिंग ड्यूटी so countervailing duty or CVD is levied to offset or counter is levied to offset or counter the benefits that foreign exporters receive the benefits that foreign exporters receive through government subsidies foreign exporters receive through government subsidies in their own countries in their own countries okay so CVDs गरिका कौन ना लेट्स से आपण इंपोर्ट करछन कोडो गोटे आपनकर लिकर आछी ठीक अछि तो सेठी मैन्युफैक्चर करिया पई सेही देशर सपोज देश ए लेट्स से हमें को गोटे देशर ना नै जिबा ओके जे हमको इंपोर्ट करूची कंट्री ए सपोज सी इंडिया को एक्सपोर्ट कर आम ताठू इंपोर्ट कर ओके लिकर इंपोर्ट कर सेठी गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देछन ना बहुत डिस्काउंट देछन आपण सेमति भाबन कि हमर एठी गोटे बोतल बियर जदि मैन्युफैक्चर करा हबो सेटा 10 टका पडुछ भाबन सेठी केंतो जदि सेटा करा होची टंकाडे पडुछ ओके तापरे आउ लेट्स से टंका 2 टका एक्स्ट्रा पड़ी जाउची ताको आनिया पई ए ड्यूटी ड्यूटी एडा सब मिसई की ताको इंपोर्ट करिया पई तेनु एठी बिकिले विथ प्रॉफिट 5-6 टका रे बिकिले प्रॉफिट हो तेनु आमर जोटा 10 टका पडुची तांकर सेटा टंकाटे पडुची काहेना ता गवर्नमेंट ताको एते फैसिलिटी दे दे सेठी ताल त आम जिंस की किनिबेनी इनफैक्ट आम देश रे आमर ही जिंस बिकिबा कष्ट होइछो समस्त तो सेउडु ही किनिबे जेंति कि मोबाइल फोन्स रे चाइना संगे रहिछि ओके ओके गाड़ी गुडा भी आपण कि अलगा भी बहुत प्रोडक्ट्स रे चाइना संगे हमें कम्पीट करतो राइट काना से माने ताकर चीप लेबर राइट्स नहीं ठीक अछि तो माने जोडी इंडिया रे गोटे लोक को गोटे लेबर को आपण 1000 टका कि लेट्स से 100 टका दोचनी घंटा को लेट्स से ताकर सेठी 25 टका 30 टका दोथिबे आ प्रोटेस्ट करिवार किछि नहीं जदि तुमे काम न करछो बाहर जाओ आ 1000 लोक पड़ी छथि तुम जगह रे काम करिया चाइना कथा कुछ बुझि पारले सो एनीवेज जा भी हो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज और CVDs okay basically are counter duties mainly to counter the benefits or the subsidies which other countries are giving to their okay exporters सेटा जदि हमें CVD जदि न लगेबा ताले हमर बहुत बिजनेस लॉस हो समस्त से ताको देश रु आनिबे इवन आनी कि हम देश रु बिकियो आम लोक निजर भी हमर जो माने भी सब ओके इंपोर्टर्स माने अछन से सब इंपोर्ट करी कि एठी बिकिबे एठी कहीं बनेबे निजे तेणु असुविधा कौन हम आम जॉब लॉस हम जो चाकरी गुड़ा ये मिलिया कथा से सब सेपट को शिफ्ट हो बुझिपारे सो दैट ए ट्रम्प जो ड्यूटी आउ जो ये सब आड़ू साड़ू चल तार ओके टैरिफ तेणु ये गोटे टाइप सेमती आप बुझिपारे समस्ते काउंटर वेलिंग ड्यूटीज माने कौन सो यही टाइप रो ड्यूटीज आपण सेतबेले इंपोज करचंती जेतबेले
आर देश रु सस्तार जिनस आसी जाउछ आपन देश को आपणकर देश रे जो माने मैन्युफैक्चर करछंदी से बिजनेसमैन को पई असुविधा हे ओके तो कौन कहूँ एटा एक्साइज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी मीन्स ड्यूटी leviable under this act as excise duty or countervailing duty as the case may be, which the state government is empowered to impose under the law enacted under entry 51 of list 2 of 7 schedule of constitution of India. गुडे जिनस कहि गला countervailing duties आउ आपनकर ओके excise duty जोटा state government levy करि परिबो 7 schedule रे कोन अछि constitution रो anyone who can tell me what is there in the 7th schedule of the constitution? There is a separation of powers. तीनिटा लिस्ट आपन को दिया हिची 7 शेड्यूल में कौन कौन यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ठीक अछि सो लिस्ट 2 टा हला स्टेट लिस्ट एंट्री 51 ओके इज रिलेटेड टू दिस स्टेट गवर्नमेंट को जिंस ऊपर आपन कर ओके ड्यूटीज पकई पारि तो ता भीतर जदी आउची ताले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैन डू इट बुझ पाले सो किसी डाउट अच्छी है एक्साइज ड्यूटी बुझिले काउंटरवेलिंग ड्यूटी बुझिले ड्यूटी जनरली कौन बुझिले ओके तार आउरी डिटेल रे अपन सिविल सर्विस की कौन एग्जाम रे आउरी डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखिया पड़ियो एटी एम एपीपी पे एगुडा एते दरकार नहीं बेसिक जति जाने दरकार मु कहि देली राइट बेसिक जति जाने दरकार मु कहि देली सेति की बुझी परले तो एक्साइज कौन एक्साइज ड्यूटी कौन जहा लिखिले countervailing duty कौन जा देखिले what is a duty generally how it is different from a tax or a surcharge okay अरे इते surcharge और जो दरकार नहीं okay duty टा कौन कहले ना आपन को से पर्टिकुलर जिंस पे आपन कहले एटा माइक्रो टैक्स और स्पेशल टैक्स सेमती आपन कहि पारे ठीक अछि बुझि परले आउ ए जो 7 शेड्यूल कहला सेथरे आपन को सेपरेशन ऑफ पावर्स अछि जोडा हम कहू ना फेडरल हमें फेडरेशन ओके क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ भी आप कहते तो से सेपरेशन ऑफ पावर टा सेटा एथरे देखाई यूनियन रो पावर कौन माने सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्टेट रो पावर कौन और कॉन्करेंट लिस्ट मिसी भी से माने लॉस बनै परिबे को सब्जेक्ट्स ऊपर ओके नेक्स्ट आसन तो एक्साइज कमिश्नर मींस द पर्सन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 देखिबा जेटा आपको जेतरा में ओके चैप्टर 2 को जीवा एक्साइज कमिश्नर से एक्साइज ऑफिसर किए एनी ऑफिसर और अदर पर्सन्स अपॉइंटेड और इन्वेस्टेड विथ पावर्स ठीक है अलग ऑफिसर से पुलिस ऑफिसर किंतु पावर टा दिया अंडर सबसेक्शन 4-5 ऑफ सेक्शन 5 एंड इंक्लूड्स द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट त कोन कहू छथि अपन कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लॉट ऑफ रेवेन्यू मैटर्स सेगुड़ा सब सही तकर डिस्ट्रिक्ट लेवल डील करती ओके सो एक्साइज रेवेन्यू तापरे excise revenue means revenue derived or derivable from any duty, tax, fee or other payment other than fine imposed by criminal court okay on confiscation imposed or ordered under this act or any other law for the time being in force related to liquor or other intoxicants and includes any payment to be made to state government under section 35 तेणु जदि कोनोसी लिकर रिलेटेड आपनकर टैक्स हे गला फाइन्स हे गला ओके ड्यूटी हे गला सेगुडा सब ओके एथरे आसीबो एक्सेप्शन कोन देला फाइन्स व्हिच आर इंपोज्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट जदि कोर्ट आपन को फाइन करजी सेटा एक्साइज रेवेन्यू रे जीवन कारण सेटा तो आपन कोर्ट पाखरे नै कि डिपॉजिट करे ओके बाकी एनीथिंग रिलेटेड टू एनी प्रोसीड्स ऑफ एक्साइज ओके जहां भी आपनकर पेमेंट्स करिवार अछि सेगुडा दैट विल गो अंडर एक्साइज रेवेन्यू only exception is if a fine has been imposed by a criminal court okay tapare export asila that means to take out of the state to any other state or country odisha ru bahar ko apon nochen se madhya pradesh ko niyantu ki se apna italy ko niyantu tanu ta pai apon fee deba padibo export fee means the fee prescribed by government for export of liquor spirit or any intoxicant then foreign liquor to ame kon dekhi dilu ame dekhilu जोटा कि अपना कंट्री लिकर एबे फॉरेन लिकर रो डेफिनेशन देला मींस एवरी लिकर इंपोर्टेड इनटू इंडिया अदर देन इंडियन मेड फॉरेन लिकर एंड कंट्री लिकर एज सच एज इंटॉक्सिकेंट्स एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी फॉरेन लिकर ठीक अछि तो माने जोटा कि टोटली सेठी बना हिची बॉटल्ड हिची सेठू ही आपण आनचन डायरेक्ट ओके
आउ इंडियन मेड फॉरेन लिकर आईएमएफएल जोटा कहली सेटा कोन ना एई फॉरेन लिकर आनी कि मिसई चंती आपण लोकली जो लिकर ता कराई दैट बिकम्स इंडियन मेड फॉरेन लिकर हैला बट फॉरेन लिकर इज कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड बॉटल्ड सब जिंस बाहर विदेश रे हुए सेटा इंडिया को इंपोर्ट कराई बुझ पाले इंपोर्ट मींस ब्रिंगिंग इनटू स्टेट फ्रॉम एनी अदर स्टेट और कंट्री ओके किंतु एठी कोन कह जाउची फॉरेन लिकर रे देखंतु इंपोर्टेड इनटू इंडिया अदर देन इंडियन मेड फॉरेन लिकर तेणु सेटा फॉरेन कंट्री रो आपण आउचन फॉरेन लिकर तापर दैट इज द इंपोर्ट fee prescribed by government for import of liquor spirit or any intoxicant तो एटा इंपोर्टेंट मार्क करंतु फॉरेन लिकर ता से तीनटा डेफिनेशन इंपोर्टेंट इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंट्री लिकर आउ फॉरेन लिकर टाइप्स ऑफ लिकर्स ता ऊपर क्वेश्चन আছে व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिकर्स अंडर द एक्ट तो फर्स्ट हैला आपनकर कंट्री लिकर ओके सेकंड हैला फॉरेन लिकर थर्ड हैला इंडियन मेड फॉरेन लिकर बुझि पाले तबर इंपोर्ट fee prescribed by government for import of liquor spirit or any okay intoxicant indian made foreign liquor already upon dekhi jandi means liquor produced manufactured or compounded in india either produce heitibo manufacture heitibo kimba compounded heitibo okay jora ki misei ki jora karala right compounding of liquor ame bujichu kono na jetebale dita ki besi टाइप रो लिकर्स को आपण मिसौचंदी इन डिफरेंट क्वांटिटीज एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ताले सेटा कंपाउंडिंग ऑफ लिकर कहवाला ठीक अछि तो सेमती कंपाउंडेड लिकर हेई ताई पारे प्रोड्यूस्ड हेई ताई पारे मैन्युफैक्चर्ड हेई ताई पारे बट इंडिया रे हिच एंड मेड इन कलर एंड फ्लेवर टू रिजेंबल जिन जिनटा कोन गोटे टाइप ऑफ फॉरेन यू नो लिकर ब्रांडी व्हिस्की और रम imported from foreign countries into India and includes milk punch and other liquors consisting or containing any such spirits but does not include foreign liquor and such other intoxicants as may declared by state government to be Indian made foreign liquor. Hela so ethare kono na like milk punch okay and other liquors which are consisting or containing any such spirits but does not include foreign liquor and such other intoxicants as may be declared by state government. Jodi state government declare kala tankara gazette re ki ei 10 ta ki ei type ro intoxicants ra Indian made foreign liquor under re jibe okay tenu produce heichi ki manufacture heichi ki compounded heichi India re au resemble karibo gin brandy whiskey or rum joda ki 12 desharu import kara heichi okay और मिल्क पंच भी सेतरे इंक्लूडेड रोच राइट सो सेगुड़ा सबु इंडियन मेड फॉरेन लिकर रे जिवो सो दैट आल्सो यू कैन मार्क एज इंपोर्टेंट तापर इंटॉक्सिकेंट मींस एनी लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस अदर देन नार्कोटिक ड्रग्स और ए psychotropic substance regulated by the NDPS Act okay which the state government may by notification declare to be an intoxicant and includes mahua flowers and molasses okay so inclusions dela mahua flowers okay and molasses eguda included rochi au baki ja government taku okay include karsibo through a notification right and exceptions kon rahila other than the you know narcotics and substances which are regulated by the NDPS Act okay so the NDPS Act under seta astuchi seta intoxicant boli apana kahibe right tapare liquor kon it means an intoxicating liquor and includes the liquor mane generally kon liquor in general English always does not mean intoxicating apan jodi you know बहुत गुड़े अपन रेस्टोरेंट्स की होटल को जिबे से माने चाहा अलगा देबे अपन को तापर टी रो लिकर ता तको सेटा भी लिकर कोंदी राइट एठी हम एक्ट हिसाब रे जा लिकर कहउछु एरा इंटॉक्सिकेटिंग लिकर दैट इज स्पिरिट्स ऑफ वाइन एनी टाइप्स ऑफ वाइन रेक्टिफाइड स्पिरिट्स ओके जोटा हम देखिल जोटा की फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाइन बियर टारी ओके पोचवाई fermented liquor made from molasses or mahua plain spirit from materials recognized and country spirit based जोटा हमें देखथिलु जोटा ग्रेन से गला ओके से गुडा
country spirit base, and every liquor consisting of or containing alcohol. जो थरे alcohol अच्छी किबा alcohol रू ही बनाई सेटा से सबु liquor under रे जिबे. Any other intoxicant substance which the state government may by notification declare to be liquor for the purpose of this act. Okay, सेटा हला the definition of liquor. Then local bodies. So these are basically your municipalities and panchayats as defined under Article 243p of Constitution of India. ठीक है तो माने अर्बन लोकल बॉडीज म्युनिसिपालिटीज हे गला आउ बहुत प्रकार अर्बन लोकल बॉडीज अछि आउ आपण का पीआरआई जोड़ा हला पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस सेटा पंचायत हिसाब रे ताको रखाई छै. ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग. व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चर? एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग हो कि आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग, by which any intoxicant is produced or prepared, including the tapping of tari producing trees and drawing of tari from trees. Natural method रे आपण ओके ट्री रू तार से जो प्रोडक्ट ड्रॉ करिकी ताको फर्मेंट करिकी ताको आपण जो कंट्री मेड लिकर हरिका करछन. ओके, तापरे रीडिस्टिलेशन. ठीक अछि, तो डिस्टिलेशन प्लांट रे आपण रीडिस्टिलेशन सेतरे करिकी जो प्रिपेयर करछन सेगुडा भी मैन्युफैक्चर अंडर रे आसी. तापरे every process for rectification, flavoring, blending or coloring of liquor or for reduction of liquor of for sale. ठीक है. So rectification, flavoring, blending, okay, और coloring of liquor or reduction of liquor for sale ये सबू process रो manufacturing में जीवो. ठीक है. फ्लेवर टा आपण बढ़ौचंदी कमोते फ्लेवरिंग करचंदी, ब्लेंडिंग करचन जोडा हम देखलु मिक्स करचन जोडा. ओके, कलर ऐड करचंदी लिकर रो, राइट. तापरे ई टर्म टा आपण बहुत तर देखछन मोलासेस कोन मींस द हेवी डार्क कलर्ड रेसिडुअल सिरप drained away in the final stage of manufacture of gur or sugar containing in solution or suspension sugars which can be fermented and includes any product formed by addition of to such syrup or any ingredient which does not substantially alter the character of such syrup but does not include any article which the state government by notification declare not to be molasses for the purpose of this act. तेणु मेनली से जो आखु आउ गुड़ तार जो बाय प्रोडक्ट रही जाए जो सिरप टा प्रोडक्शन रे जो सिरप टा रही जाए. ओके, तो सेटा आपण को मोलासेस कहउछन. तो सेथुरु आपण यू नो लिकर इज मेड फ्रॉम दैट इज मोलासेस. ओके, तापरे पछवाई. ओके, जो हम को पच्ची जाईची, राइट. सो दैट मींस फर्मेंटेशन हेची. तार मींस फर्मेंटेड राइस, millet or other grain whether mixed with any liquid or not, and any liquid obtained therefrom whether diluted or undiluted but does not include beer. तो पचवाई रे beer टा आसीबनी. ओके, बाकी आपण जदी कोनोसी ग्रेन हे गला, राइस हे गला, मिलेट्स हे गला ताको फर्मेंट करके आपण ओके किछि गोटा बनौछन कि से लिक्विड टा ही ओके जोटा कि ऑब्टेन करा होची फर्मेंटेशन पर, राइट. whether diluted or undiluted माने सेतर पुनी पानी पानी मिसै कि ताको आपण टिके डाइल्यूट करछन किबा सेही पूरा स्ट्रांग ओके बिना अनडाइल्यूटेड ताको पानीटा बाहर करछन जेमति भी हो सेटा को पछवाई हो जाउछ. माने फर्मेंटेशन हेछि तार पच्ची छि सेटा ओडिया रे जेमति हमें कहन. ओके, बट सेतर बियर टा इंक्लूडेड नो, दैट इज द एक्सक्लूजन. तापर प्लेस मींस बिल्डिंग, हाउस, शॉप, बूथ, वेसल, राफ्ट, व्हीकल और टेंट. तो बिल्डिंग, हाउस, शॉप, बूथ सेटा बुझी परछते आपण. वेसल हला शिप्स, बोट्स. ओके, राफ्ट हला तार गोटे माइनेचर वर्जन. राफ्ट जोटा राफ्टिंग करिक माने गोटे यूजिंग ए ओर और ए पेडल सेटा आपण ताकू चलेबे. ओके, व्हीकल और टेंट. तो प्लेस सेगुडा भी रहबे सब उदेतरे आसुछ. प्रेस्क्राइब्ड मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. एटा में कोन ओडिसा एक्साइज एक्ट पढुछु ना, ओडिसा एक्साइज रूल्स अछि. Hello. Prescribed means prescribed by rules made under this act. Then retail license in relation to sale of foreign liquor and Indian made foreign liquor means license to sell in sealed or capsule bottles. Okay, open selling sealed or capsule bottles. Pouches. Okay, the amar pouch re bhi bahut bikauch and includes the sale of other intoxicants to individual customers
of quantities not exceeding those declared in section 4 at any one time or in any one transaction. सेटा हला रिटेल लाइसेंस जोड़ा अपन देखछथि जनरली मद दुकान रे लोक मन जाई सेटू परचेज करछथि राइट सेटा रिटेल लाइसेंस दे कैन सेल इट टू इंडिविजुअल कस्टमर्स सेल और सेलिंग इंक्लूड्स एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग गिफ्ट ठीक अछि तो ट्रांसफर्स भी एथरे इंक्लूडेड सो आई एम गिफ्टिंग यू ओके गोटे बॉटल ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट तो सेटा भी सेल रे जिवो ओके तो सेल includes any transfer including gift. Spirit means any liquor containing alcohol obtained by distillation whether it is denatured or not. Okay, so that is spirit. Okay, any alcohol obtained by distillation whether it is denatured or not. तापर spurious liquor एटा important काहे ना एटा आर ऊपर बहुत गुडे केस हमें देखिबा means liquor which has been adulterated with an object to bring intoxication easily. Okay, सेटा important no important है ना ये पार्टा is harmful to the consumers. State government means government of Odisha. Tori means fermented or unfermented juice drawn from any coconut, okay, palmia, date or any kind of palm tree. ठीक है खजूर and others date palm जोटा मैं कहूँ. So unfermented juice that is tori. ताको आनी की पूरी fermentation fermented or unfermented जहाँ भी है बड़ा जोटी fresh थी वो ताको ferment करिवे ओके और fermented juice भी केबे केबे ओके डायरेक्टली भी ड्रॉ करिकी ताको fermented कराजे राइट तो एगुडा सब ट्री रु आपण ड्रॉ करछन दैट इज tori then transport means to remove from one place to another within the state एला एटा हला important within the state whether or not the intervening area lies wholly within the state and includes to move from a place outside the state to any other place outside it, though the intervening area lies within the state. Okay, so within the state heithiba kotha. Okay, tamane kono suppose A B C mu A point ru start करली एटा ओडिसा भितर अछि मते C point को जिबार अछि एटा भी ओडिसा भितर अछि किंतु ता मझिरे मु point B रू रास्ताटा नेली जोटा कि गोटे नेबरिंग स्टेट रे अछि ताहले भी एटा ट्रांसपोर्ट विल बी ओके ताको ट्रांसपोर्ट हिसाब रे आपण कहि परिबे ओके whether or not the intervening area एटी बी हैला intervening area lies within the state and includes to move from a place outside the state to any other place outside it okay through the intervening area lying within the state सेटा भी ट्रांसपोर्ट अंडर रे आसी तापरे हमें रिटेल लाइसेंस देखिथिलु एबे होलसेल लाइसेंस रिटेल लाइसेंस जरो से कस्टमर को एंड कस्टमर को बिकी परिबो होलसेल लाइसेंस जरो in relation to sale of liquor and other intoxicants means license to sell to holder of retail license in excess of quantities declared under section 4 section 4 रे जो quantities आपनकर एठी वाइछि okay so that will be basically ताटू अधिका से माने रखी परिबे आउ देई परिबे रिटेल काउंटर्स रो कि रिटेल शॉप्स रो एटा हला आपनकर सेक्शन 2 सेक्शन 3 हला पावर टू डिक्लेयर what shall be deemed to be liquor country liquor foreign liquor and India made foreign liquors respectively the state government decide कर परिबे कोटा country liquor foreign liquor or Indian made foreign liquor state government may by notification declare from time to time what other intoxicants other than those provided in clause G, and S of section 2 for the purpose of this act shall be deemed to be country liquor, foreign liquor and Indian made foreign liquor respectively. तो सेटा सबले क्लासिफिकेशन टा स्टेट गवर्नमेंट सेटा कर परि कि को टाइप रो लिकर टा कंट्री लिकर हबो फॉरेन लिकर हबो कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर हबो आउ लास्ट हला ए चैप्टर पई सेक्शन 4 डिक्लेरेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिटेल एंड होलसेल स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में डिक्लेयर विथ respect either of wholesaler whole of state or to any specified local area and either for purchases generally or for any specified class of purchases and either generally or for any specified occasion what quantity of any intoxicant shall for this purpose of this act be the limit of possession a limit ta ka bhai individual okay carrying capacity mane gote retail pai retailer pai सेमती wholesaler pai भी थिबो
ठीक अछि सो that will be decided by the state government कि गोटे लोक ता पाखरे एतिकी मिलीलीटर कि एतिकी लीटर सेटा state government can change it from time to time बुझि पारे so this is your chapter 1 आम मटेरियल को आसंतु जस्ट खाली इंपोर्टेंट पॉइंट्स उडा मु खाली टिके कहि देबी सेटा then we'll write the answer so section 2 रे already we have seen this in detail okay तो सेटा टिके जस्ट देखि देबे मैक्सिमम हमर किछु दरकार नै केस उडा दरकार ओके सेही दुटा केस बहुत इंपोर्टेंट सेटा टिके देखि देबे Priyavrata Sahu versus State of Odisha. Okay, clarified that confiscation under Section 72 follows offences defined under Section 2 definitions reiterating proper classification. Now, Manorama Devi versus State of Odisha said, okay, accurate category determination. IMFL versus country liquor. Right. Apar recent cases bhi achi, then you can go through. Jemti कहली case टा टिके देखि देबे Indian कानून रे. ठीक अछि. तापरे 3 टा आसत 3 रे भी again rule making authority scope of classification administrative efficacy pillar of enforcement framework okay again and ए जे तरह quantity टा में देखिए okay nothing much एथरे बेसिक किछि ये करबार नहीं खाली जो माने नुआ स्टूडेंट्स अछंती से माने टिके मान नुआ स्टूडेंट इन द सेंस कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स अछंती ए मैक्सिम्स उडा टिके देखिबे मैक्सिम्स उडा आपन को सेमेस्टर परीक्षा हरके में भी दरकार हो ठीक अछि सो दीस आर द फर्स्ट 4 फिफ्थ सेक्शन टा हम काल टू पढिबा काना सेटा चैप्टर 2 अंडर रे आपन को आसुछ दैट इज सेक्शन 5 एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल अपील एंड रिवीजन एटा बहुत इंपोर्टेंट काहे कि ना एथरे एक्साइज कमिश्नर तापरे अलगा ऑफिसर्स मन ठीक अछि तो तांकर कंट्रोल अपील और रिवीजन पाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट सो ऑल दीस थिंग्स वी विल सी बुझि परले सो जोटा हमको लिखिबार अछि दैट आई हैड टोल्ड यू द क्वेश्चन ऑलरेडी कहिथिली भी सेटा टेक डाउन तथापि जदि के लिखि नांती सेटा you can just go through this question hala discuss the objectives or goals and scope of Odisha Excise Act 2008 hala 8 objectives ame kahitulu right these 8 and then scope ta bhi apanakara all the scopes I had given you okay तो ताकू हमको 15 minutes सेटा लिखिबार अछि 15 मार्क 15 मिनिट 3 लाइन रो इंट्रोडक्शन 3 लाइन रो कंक्लूजन जदि अपन चाह 15 मार्क तो दबा में पड़ियो 3 लाइन रो इंट्रोडक्शन हला देन सीधा टू द पॉइंट आसबे दीटा जिंस पचारछि हेडिंग्स देबे ये जेम देछि ऑब्जेक्टिव ऑफ ओडिशा एक्साइज एक्ट कि खाली ऑब्जेक्टिव्स अपन दे देबे आउ ए 8टी पॉइंट किबा जा अपन बुझ अपन ऐड भी कर परिबे सेतरे तर एम टा कोन से पचारछि ना तो तापर स्कोप टा भी सेमति 8 9टा पॉइंट अपन दबार अछि तो मिसी की अपन सही 15टा पॉइंट 16टा पॉइंट अपन हे जो 8 8 कर दे बुझ परले सो 5 सर मिनट्स याको कोन ए3 एक्सप्लेन करिर अछि 15 मार्क्स अपन देखन जदि आपनकर वर्ड स्पीड हला 20 टू 25 वर्ड्स पर मिनिट ताले तो आराम रे अपन लिखि परिबे ठीक अछि कि अपन चेष्टा करंतु लिखिया पे जदि न सेटा 5 मार्क क्वेश्चन रे सेगुडा लिखि होबनी से पे ओनली हेडिंग्स दे दो एठी जदि एठी देखंतु हेडिंग्स उडा केमतिया सब्सटेंटिव स्कोप मु खाली एतिक लिख देले कोनटा बुझा पड़ियो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप खाली लिख देले कोनटा बुझा पड़ियो तो एठी स्कोप रे जो जोडा दिया आइची सेटा टिके हम एक्सप्लेन करिया पड़ियो किंतु एठी जो दिया आइची एठी एई टाइप रो हेडिंग्स जोठी थिबो खाली हेडिंग देले चली जो टू रेगुलेट द लिकर ट्रेड इन कंट्रोल एंड लॉफुल मैनर टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ एंड प्रमोट रेस्पोंसिबल ड्रिंकिंग एटा बुझाई पाउची किछ असुविधा नै बुझि परले त तेनु आपण जदि सेमती गोटे लाइन लिखिया पे जाउ जन तार सब्सटेंटिव स्कोप आपण लिखिबे सो इट इंक्लूड्स अल्कोहल बियर टॉडी स्पिरिट्स within the geographical limits of Odisha and other notified substances सेतिकी सरला ठीक है तार हेडिंग द दरकार नै सब हेडिंग द दरकार बुझि परले समय हिसाब रे प्रेजेंटेशन सेटा हला मोस्ट इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम यू आर हैविंग यू हैव टू प्रेजेंट अकॉर्डिंगली बुझि परछन yes thank you okay so then I will put the timer now so eta 15 minutes upon nebe okay and after that
you can submit it to me. ताको गोटे पीडीएफ करिकी 9437002210 रे पठे देबे। पीडीएफ करे दरकार नहीं, गोटिए तो क्वेश्चन अछि, ये फोटो फोटो उठे की पठे देले भी चलिबो। ठीक अछि। So I am just putting the stopwatch now. आपण जदि एबे ताको लेखिया पे चाहनते निज टाइम रे लेखले भी किछ मोर इंटेंशन है ना आपण लेखिया दरकार। यू हैव टू राइट एबे लेखंतु 2 दिन पर लेखंतु जेतले आज क्लास पर तो मटेरियल अपलोड कर देबी तो ताको देखि कि लेखंतु किछ असुविधा नहीं। ओके बट यू हैव टू राइट, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। ओके आपण को लेखिया पे पड़िबो, सेटा को हमको मन रखिया अछि। ओके okay, so let us start writing then. 15 minutes है ला, 15 marks 15 minutes ए आपनकर एपीपी रो सब पेपर रो स्ट्रक्चर से 150 मार्क रो पेपर चारटा जाका मेंस रो आउ सब रो 150 मिनिट 2.5 hours दियो ता माने सब थरो 1 mark is equal to 1 minute बुझि परले। एटा 15 मार्क क्वेश्चन 15 मिनिट रे आपन लिखियार अछि। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग।
Okay, so please stop writing. 15 minutes up. जो मैंने लिखी जितकी लिखी पारचंदी सेतिकी. Okay, you can send it to me. So it's already almost 11. But if you have written, you can send it to me. Don't देखी देवी. Otherwise, अपना निजर time रे ताकू पठेबे किसी problem नहीं. Okay. Okay. अभिप्सा ठीक है. Okay. ठीक अच्छी अपना स्कोप का सर जो लिखी छथी हाँ सर सही सर था. नमस्कार सर हाँ नमस्कार. सर को नंबर रे पठेबी 9437002210 94 2210 हाँ 9437 943700 मु चैट रे दे दूची. 2210 हाँ थैंक यू सर चैट रे दे देची नंबर टा सेथरे अपन को पठेबे. ओके अभिप्सा ठीक अछि अपना किंतु देखंतु जो अपन जो डायग्राम टा देले ना स्कोप रो सेटा अपन जो ओरिएंटेशन एटा कोन आपको लैंडस्केप ओरिएंटेशन में दी जदी तो ताकू बुले की पढ़िबे इवैल्यूएटर सेटा इवैल्यूएटर रो साइकोलॉजी टा की स्टडी करे पड़िबो. ठीक है तार एज ग्रुप कोन आउ तापरे से ए सब जिंसोडा को इरा तो बेटर टिके फॉर्मल वे रे लिखि देटा एटा बेटर. ठीक है तो सेटा अदरवाइज कंटेंट इज फाइन. कंटेंट रे किछि प्रॉब्लम नहीं. खाली मु टिके वरीड अछि ए जिंसटा बांगी सेटा ऑल्दो आपण लिखि जंती सब पॉइंट सेटा से माने केते ताको ये करिवे एप्रिशिएट करिवे. ओके आउ इंप्रूवमेंट को कराई परिबो तो फर्स्ट पेज रे जोटा आपण लिखि जंती पॉइंट वाइज तो सेठी देखंतु जो जगह रे टिके आपण को लागु छी कि इंपोर्टेंट फ्रेज करिका अछि सेटा आपण अंडरलाइन कर दे पर. ओके यू कैन अंडरलाइन दोस फ्रेजेस. ठीक अछि तापरे सुनील तो ठीक अछि सुनील आपनकर आंसर आउ सेटा ठीक अछि पूरा वन लाइन रो इंट्रोडक्शन अछि वन लाइन रो कंक्लूजन अछि. ओके पॉइंट्स रे आपण लिखि जंती आ अंडरलाइनिंग भी कर जंती जोठी दरकार अछि. ओके सो आई थिंक इट इज फाइन. ठीक अछि पूरा. ओके डायग्राम टा भी आपण तको ये कर जंती ठीक अछि दैट इज आल्सो फाइन. ओके ऑब्जेक्ट ठीक अछि एतरे आउ किछि बेसी किछि चेंज भी आपण करि परिबे. गुड ठीक अछि आपण माने एग्जाम रे बेसिकली एमती लिखिबार अछि ए स्ट्रक्चर रे लिखिबार अछि. ओके ଆଜ୍ଞା sir. ए जो लास्ट तीनटा डिजिट 105 एटा रश्मि रेखा एटा आपनकर. सर यस सर अच्छा अच्छा एटा एक्चुअली मोर सेव नहीं तो ठीक अछि. अ हाँ आपनकर स्ट्रक्चर ठीक अछि. गोटे जिंस जेते आपण फर्स्ट टाइम आज लिखि पठेले जो आपण लिखचंती ना इंट्रोडक्शन तो यस सेही सर वर्ड टा लिखा हुएनी माने इंट्रोडक्शन टा आपण देबे प्रथम पैराग्राफ टा इंट्रोडक्शन यस लास्ट सर पैराग्राफ टा कंक्लूजन तो ता हेडिंग दिया हुएनी तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन टा काटिबे.
बाकी जहाँ लिखते ठीक अच्छे आउ 15 मार्क क्वेश्चन रे चेष्टा करिवे गोटे डायग्राम दबा पाई ठीक अच्छे तो केवल 15 मार्क क्वेश्चन 10 मार्क क्वेश्चन रे एते दरकार न थाए कि 10 मार्क क्वेश्चन रे शॉर्ट डायग्राम्स आपण दे परिबे आपण देखिबे गोटे क्लास डायग्राम रो कराई छी हाउ टू मेक डायग्राम्स ओके जो हमर ये भाई शॉर्ट डायग्राम्स केमती करिवे और लॉन्ग डायग्राम्स केमती करिवे ठीक अच्छे माने 15 मार्क में केमती डायग्राम करिवे और छोट 5 मार्क में भी हे परिबे केबे केबे 10 मार्क में भी छोट छोट डायग्राम सेटा ठीक अच्छे तो खाली सेटा गोटे आपण इंप्रूवमेंट करिवे आउ कोन इंप्रूवमेंट हे परिबो आपणकर अंडरलाइनिंग ऑफ इंपोर्टेंट फ्रेजेस एंड एठी आपण कोन आपण खाली हेडिंग्स उडा अंडरलाइन करछथि राइट ऑब्जेक्टिव्स आर तापर स्कोप ता आपण देले किंतु ता भीतर जो लिखिछंती जिंस उडा तारो भी जो इंपोर्टेंट कीवर्ड्स अछि ताको भी आपण अंडरलाइन करिवार अछि बुझि ठीक गले अच्छे ठीक अच्छे सर तो सेटा नेक्स्ट क्लास रे सेटा डिके ताको ये कर दो ठीक ओके अच्छे अदरवाइज इट इज फाइन ठीक फर्स्ट थर लेक्चर दे आपण तो इट इज फाइन तापर नेक्स्ट हला शुभश्री आगे से नमस्कार सर। नमस्कार आपनकर ठीक अच्छे आपण कंटेंट भी ठीक अच्छी आउ तार ये भी ठीक अच्छी कोनटा तार जो जति लिखिया कथा ओके सेटा भी वर्ड काउंट कहीं ना आठू अधिक लिखी सेमती हेनी 10 मिनट 15 मिनट रे ठीक अच्छे तो इट इज फाइन तो आप डायग्राम के देइचंती वन लाइन रो इंट्रोडक्शन वन लाइन रो कंक्लूजन आउ सब पॉइंट्स उडा अंडरलाइन हेची ठीक अंडरलाइनिंग प्रोसेस टा भी ठीक है जेतु जो माने प्लेन पेपर रे लिखुचंती सेटा माइंड रे रखंतु परीक्षा खाताटा रूल्ड मिलियो तेणु से जो अंडरलाइन करिवे ना सेटा टिके बेसलाइन माने जोटी लिखुचंती आपण से लाइन टिके तळकु करिवे सुबश्री आपण ठीक करछन सेटा ताले जणा पडला कि हां ए पार्ट उडा मोर इंपोर्टेंट अछि ओके तो ताका आखि जा भी हेले सही पॉइंट्स उडा ऊपर पडिवो एंड यू विल गेट बेटर मार्क्स काहे कि अदरवाइज से आपण आंसर के माने पढिबा ऊपर बेसिकली ये न थांदी बुझि परले तो आपण को सेटा देखिया के पडिवो राइट ठीक अछि एटा एवरीथिंग इज फाइन एटा इट इज ओके तापर नेक्स्ट पठिचंती वैष्णव प्रिया तो Yes, sir. एठी आपण गोटे ऐड कर परिबे वन लाइन इंट्रोडक्शन ओके देखंतु से टेस्ट रे केमती सब दिया हिची फॉर एग्जांपल आपण जोटा लिखिले ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ओडिशा एक्सरसाइज एक्ट 2008 ओके तो सेटा तो हेडिंग ही आसी गला दी लेकिन 15 मार्क क्वेश्चन ना सेत पे दी लाइन रा इंट्रोडक्शन टिके दरकार हबो कि गोटे लाइन हेले भी चलो दी लाइन हेले भी चलो अदरवाइज बाकी सब आंसर्स आपनकर बाकी स्कोप पे ठीक अछि एटा ठीक अछि और तपर आपण डायग्राम दीटा करचंती गोटे ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप पई से पार्ट भी ठीक अछि द थिंग इज दैट जति कि आपण कंटेंट लिखिचंती मे बी 15 मिनिट्स रे टिके कंप्लीट करबा डिफिकल्ट हो कना एटा रहिला आपन को 3.5 और 3.5 पेजेस सीधा रहलो 15 मिनिट्स रे ओके नॉर्मली 2 पेज किंबा 3 पेज आपण एटा को 15 मिनिट भीतर सरचन ना किछि 1-2 मिनिट्स एक्स्ट्रा आपण लागिला So 1 minute only is a 1 मिनिट conclusion. खंडे एक्स्ट्रा लागिला ना ठीक अछि बाकी स्ट्रक्चर एंड ऑल इज फाइन आउ आपण हेडिंग सब हेडिंग्स आउ पॉइंट्स रे लिखछथि आउ कोन इंप्रूव करि परिबे तो आपण एबे खाली सब हेडिंग्स उडा को अंडरलाइन करछथि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को जो कंटेंट आपण को रहउछि ता भीतर भी जोटा इंपोर्टेंट कीवर्ड्स अछि आपण को लागिला सेटा अंडरलाइन करते जेहेतु आपण पूरा बुलेट पॉइंट फॉर्म रे लिखिछथि तेनु सेटा सब गुडा पॉइंट्स हिसाब रे आसुछि सो दैट इज फाइन किछि तरे प्रॉब्लम नै बट सेही पॉइंट टा खाली के देखिबे जदि आपण अंडरलाइन कर परिबे आउ टाइम टा को देखिबे ओके Yes, फाइन yes. देन वी विल स्टॉप हियर देन ऑलरेडी 11 o'clock एंड जदि दिनटा एते भलमो एते बड़ एक्सीडेंट हमर रहि गला
So tomorrow we will continue with this. Okay, the class पर मैं upload कर देवी जो माने देखी की लिखिबे ये टाको, so you can refer and write. Okay, ताको देखी की आपण लिख परिबे and up to 10 की 20 जहाँ भी अपलोड है ताको ये चेष्टा करिवे काली क्लास आगुरु ठीक है पढ़ी देवे सेटा ताले it will be easier. ठीक है सहज होबे सेटा. Okay, so we'll stop here then. Namaskar. नमस्कार सर. नमस्कार.